त्रिपाठी सर पास में ही है सर, सिटी नौगांव करके है। अच्छा अच्छा, मध्य प्रदेश में ही। जी सर, जी सर। अच्छा, वेरी गुड। हालांकि सर अब कुछ भी ग्लोबलाइजेशन का जमाना है तो वाइडली स्प्रेड हो रहा है इंस्टीट्यूशन भी। हाँ, वी आर होपफुली ओपनिंग यूनिवर्सिटी इन भोपाल आल्सो। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आपके पास बिहार में भी सर प्लान बन रहा है। वेरी गुड, आइए आइए आइए। हम भी बिहार के रहने वाले हैं, अभी झारखंड में है लेकिन रहने वाले बिहार के। सर एक्चुअली सर जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो प्रावधान रखे गए हैं, तो उसमें क्या है सर, सिंगल स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशन जो एक ही कोर्स रन करते हैं, उनका थोड़ा एग्जिस्टेंस मुश्किल है, क्योंकि एक बहुत ज्यादा ऑप्शनल दे रहे हैं। हाँ, मल्टी मतलब फैकल्टी होना चाहिए, स्टूडेंट को ऑप्शंस मिलने चाहिए अदर देन। संतोष जी से चर्चा होती रहती है इस बारे में। तो मेरा भी आपको सुझाव है कि इसी कदम में, और ये सिंपलीफाई भी कर रहा है सर, प्राइवेट यूनिवर्सिटी को खोलना काफी इजी कर रहा है सर। इस पर हम लोग सोच रहे हैं, ये हम लोग परसीव किया है। हाँ राकेश जी, फॉर्म का कोई मतलब नहीं है, आप जाइए ना, क्लिक कीजिए ना, सीधे आ जाइएगा। तो व्हाट्सएप पर जाके उस पर क्लिक कीजिए, वो जो दिया हुआ है, ठीक है, रूम का। ये इनविटेशन वाला खोलिए, इनविटेशन वाला है चिट्ठी है ना, उसमें देखिए कि लंबा सा एक जूम का दिया हुआ है। अब म्यूट हो जाता है। हेलो हेलो, आवाज जा रही है? हाँ, जब टेलीफोन अटेंड करते हैं तो अपने आप म्यूट हो जाता है, ये प्रॉब्लम। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग टू ईच ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ, जब टेलीफोन अटेंड करते हैं तो अपने आप म्यूट हो जाता है, ये प्रॉब्लम। गुड मॉर्निंग। राकेश का नंबर है क्या आपके पास? गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। राकेश का नंबर आपके पास है झा सर? हाँ, जब टेलीफोन अटेंड करते हैं तो अपने आप म्यूट हो जाता है, ये प्रॉब्लम। गुड मॉर्निंग। राकेश का नंबर है क्या आपके पास झा सर? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। राकेश का नंबर आपके पास है झा सर? हाँ, जब टेलीफोन अटेंड करते हैं तो अपने आप रिपीटेडली साउंड क्यों आ रहा है? एक बार हम बोले हैं, रिपीटेडली मेरे आवाज आ रही है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग झा सर। गुड मॉर्निंग सर। ये रिपीटेड साउंड आ रहा है मेरे पास, फोन अटेंड करते हैं तो अपने आप रिपीटेडली साउंड क्यों आ रहा है? एनी टाइम्स मेरे आ रहा है, जो हम बोल रहे हैं उसको बहुत बार आ रहा है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हाँ सर, गुड मॉर्निंग सर। यहाँ हम लोग के पास भी एक ही बार आ रहा है। एनी टाइम्स जो हम बोल रहे हैं रिपीटेड साउंड मेरे पास आ रहा है, इवन आफ्टर मिनट और 2 ऐसा क्यों हो रहा है? सर हमारे पास एक ही बार आ रहा है, वहाँ पे शायद आपका स्पीकर ऑन है इसीलिए हम लोग के पास एक ही बार आ रहा है। स्पीकर अलग से तो हमने जो लगाया नहीं है इसमें। साउंड मेरे सर ईयरफोन निकाल के फिर से लगाइए। निकाल के लगावे स्पीकर अलग से। सर ईयरफोन निकाल के फिर से लगाइए। हाँ, लगा फिर निकाल के लगाए हमने। क्या ठीक है? आवाज जा रही है मेरी? यस सर। ठीक है, इट्स ऑल ओके, सो स्टीला मैडम कंटिन्यू। आवाज जा रही है मेरी? यस सर। ठीक है, इट्स ऑल ओके, स्टीला मैडम कंटिन्यू। आवाज जा रही है मेरी? यस सर। फैज अहमद साहब को गुड मॉर्निंग। फैज अहमद साहब को गुड मॉर्निंग।
Yes, sir. Hello everyone, good morning. Welcome and thank you for dialing in for our webinar titled Adaptation of Life During COVID-19, Precaution and Treatment. My name is Snigdha Bagh. Hello everyone. And I'm working as an assistant professor Good morning, ma'am. dialing in for our webinar at the Om Sadashiva College of Pharmacy. In this 2 days webinar, we'll be discussing about the ways of adapting to life during COVID times. As an assistant professor Good morning, ma'am. at the Om Sadashiva College of Pharmacy. In today's session, in this 2 days webinar, we'll be discussing about the ways. I'm sorry, I guess there is some technical problem. We'll start again. Good morning, ma'am. Everyone should mute. Everyone should mute their microphone unless and until they. Sir, am I audible right now? Yes, ma'am. Everybody please mute your mic. Okay, I'll start over again. Sir, am I audible right now? Yes, ma'am. Everybody please mute your mic. Okay, I'll start. Sir, am I audible right now? Okay, I'll start. Sir, am I audible right now? Sir, there's a technical problem. We'll just wait for 5 minutes. Hello, everyone. Sir, am I audible right now? Yes, ma'am. Okay. Yeah, continue. Okay, sir. We'll start over again. Sorry for the technical issue. Welcome and thank you for dialing in for our webinar titled Adaptation of Life During COVID-19, Precaution and Treatment. My name is Snigdha Bagh and I'm working as an assistant professor at the Om Sadashiva College of Pharmacy. In this 2 days webinar, we'll be discussing about the ways of adapting to life during COVID times. In today's session, we'll be discussing about the FAQs on COVID vaccine and management of post-COVID complications, featuring Shri Girish Tripathi sir and Dr. Sailendra Mahanta sir. Before we move ahead, I would request you all to join hands for Saraswati Vandana to mark the commencement of the program. कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः
सम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमाम् आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदाम् जाड्यान्धकारापहा हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधति पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम् Thank you all. Moving ahead, we'll just have a short briefing of the webinar. It has been over a year since we were told to stay at home. It's hard to imagine, isn't it, that we have been staying at home, physically distancing with each other and adjusting to a new way of life for an entire year. And the amazing reality is that we, as incredibly wonderful and complex beings, have adjusted and adapted so well in such a short amount of time. It is definitely worth saying that adjustment and adaptation are not always easy. This time we are going through is certainly rough. While humans are resilient, we are also human. It is important to recognize that this time is super stressful and to understand the effects of such stress on the human body and psyche, and to help you adapt in a positive way. The COVID-19 pandemic has posed many challenges in maintaining standards of care and treatment for patients, while managing the increased anxieties of patients, carers, and the public in general. Therefore, this webinar session has been organized to help and guide you all how to deal with this situation and adapt to the new normal. Now, I would request Dr. B.L. Das sir, Dean of Om Sadashiva College of Pharmacy, Director of Triveni College of Pharmacy, and former Director, Drugs Come Straight Drug Controller, to deliver a few words welcoming our guests and our audiences. Sir, you are muted, sir. Is it? Yes, sir. Yes. Thank you, Madam Snigdha. Good morning to each of you. Greetings of the day
and I welcome each of you in this platform present today on the platform of Om Sadasiv College of Pharmacy, Devghar. It is our privilege that Sri Girish Tripathi, Vice Chancellor of Sri Krishna University, Chhatarpur, is with us, and it is a great pleasure for me to welcome him in this platform. This is a platform of Om Sadasiv College Pharmacy, Devghar. Of course, not physically, but there is a great importance of this place. This Devghar has a great importance because it is a place of Jyotirlingam Baba Vidyanath Dham. And whoever comes here, whoever has a darshan of Manokamna Darshan Jyotirlingam blessed by the Lord Shiva, and not only the darshan, even the asmaran, not only the darshan, even asmaran of this place, asmaran of this temple, asmaran of this Manokamna Lingam, Jyoti Lingam is fruitful, and it is bestowed Manokamna to each of the visitors and the person who visit this place. So it is a privilege, I think, for Sri Tripathi also, that he is in the asmaran of this place, Devghar, Jyotirlinga place, and I also invite him. Unfortunately, the situation prevails that we cannot come together, we cannot move somewhere else, we cannot gather together, but I extend my heartiest invitation to Sri Tripathi that whenever the situation is conducive and it is convenient for you, please visit this place, and you will be my esteemed guest, our Devghar. And I think it will be a blessing for you also and for us also, that we will have a darshan and we will learn and many things from you if we are in the physical contact with you. So I extend my heartiest invitation to come over the Devghar whenever it is possible, and Sri Tripathi will be the esteemed guest of ours. He will be blessed with the Jyotirlinga's Ashirwad, and we will be blessed with their knowledge, with their experience, and with their way of working. Dr. Sri Tripathi is not only a Vice Chancellor, he has awarded with the Asian Education Awards, and is a very, very popular academician also. Now the thing is, why we are having this webinar? What is the use of this webinar? Why we are here? That must be thought in the mind, that the idea of a person can be circulated in paper or by the social media. He can write a paper which he is going to speak today, and many people can read it. He can give it on the digital social form, and many people can read it. But meeting together, even on the virtual platform, has much significance. Meeting together has the much significance. Once we are in the contact of Sri Tripathi or anyone else, whenever we are in such webinar or seminar, we learn from him many things. We interact with him. We know what the institution from where he has come is doing, how they are doing, what is their methodology, what is their approach.
these things cannot be written on a paper or on a digital media. It is only possible when we interact with each other. And this is the significance of this webinar or any webinar, that we come into the contact with a person from whom we want to know many things, from where he has come. Not only his personal intelligence or personal knowledge. The person will impart so many things which he has, which he is carrying from the institution from where he has come. And this is not new for us. Teaching cannot be completed within the boundary wall of a university or college. However big it is, no matter. Interaction must be there. Interaction with the student to student, interaction to the teacher to teacher, interaction to the teacher to a student is required. Unless and until interaction is there, the teaching and training is not complete. So this is the privilege, this is the opportunity that we will interact with Sri Tripathi, a great academician, and we will learn how he is managing, how he is running the university, what are the methodology of his teaching, laboratory practices, and we will have the opportunity to talk to him when on this platform also. And such culture is not new for us, for India. It is not new. We used to have Gurukul in ancient India in 5,000, 3,000 years back. We have the history, we have the record that we used to have the Gurukul, and the Guru from one ashram to another ashram used to go there. They used to have this discourse. They used to have the discussion on many topics along with the students. This is not new for us. It is being done in the India since 4,000 or 5,000 years back, that the record says, even more than that. So it is very beneficial. It is a part of education to the student, and it is a part of learning for the teachers also. It is not only for the student, it is for us also. We teacher, we learn many things when we come in the contact with, interact with a person like Sri Tripathi. So it is a great privilege on this platform that we are going to interact with a person, a successful person. He must have started career with assistant professor, and now he is a vice chancellor. How he did, what is what is behind the success, that we will know. How we speak, how we will share his ideas, that privilege we will get today from Sri Tripathi when he will deliver the lecture, and we will have the opportunity to ask questions from him, and that he will answer, and we will learn many things. Now, the thing is, today is the this time is a very difficult time. The humanity, whole humanity throughout the globe is in the trouble, and people are scared with one virus, one disease. People has forgotten the diabetic, people has forgotten the heart disease and neural disease and arthritis. They are all one disease. People are scared, and people are talking. What is corona? What is virus? How can be prevented? How can be treated? This is the talk of today everywhere, either on the tea stall, or on the battle stall, or on the college, or on the medical fraternity, or pharmacy fraternity. Everywhere there is a top topic for the discussion is corona. And Sri Tripathi is going to talk, is going to deliver a speech regarding these frequently asked questions. Each one of us asked to someone, what is this, what is that regarding corona. Today,
we will have this opportunity that Sri Tripathi will talk with us. Sri Tripathi will speak on frequently asked questions regarding the coronas, and it will be helpful in understanding how to prevent corona, how to counter with the treatment of the corona. That will be very helpful for us, and I think it will be soothing for us that so many knowledge that we will get after hearing his speech and interacting with him. Now, once again, I don't want to take much time because it is the time to hear Sri Tripathi. So once again, I welcome him in this platform of Om Sadashiva College of Pharmacy, and even virtually at Devghar Jyotirlingam Place. I welcome him. I welcome all of you. I welcome all the teachers. I welcome all the distinguished guests. I welcome all the students who are available here, who is participating here. And I hope that you all will, along with myself also, will enjoy the talk delivered, will be delivered by Sri Tripathi, and we will learn many things from those talks. And even if we will have any confusion, then we will ask questions, we will get it clarified, we will enrich our knowledge from Sri Tripathi. So once again, I welcome all of you in this platform, and thanks to all of you that you have come here, you are participating. Thank you very much. Thank you, sir. Here's presenting a small AV of our college. Welcome to Om Sadashiva College of Pharmacy. Om Sadashiva College of Pharmacy is a unit of Om Sadashiva Charitable Trust. It was established in the year 2018. The college is approved by Pharmacy Council of India, New Delhi. Courses offered by college are Diploma in Pharmacy and Bachelor of Pharmacy. The trustee of Om Sadashiva Charitable Trust are Dr. B.L. Das Chairman, Shri Ashok Kumar Gupta Vice Chairman, and Shri Udit Kumar Deo Secretary. The main vision of the trust is Trust believes in contributing to the growth of our nation by providing quality education in pharmacy. The committee members of college are Shri Ram Rudra Prasad Deo, Retired District Judge Jharkhand, Shri Madan Mohan Prasad, Ex-State Drug Controller Bihar, Shri Hemant Kumar Sinha, Ex-State Drug Controller Bihar, Professor Ram Nandan Singh, Retired Associate Professor and HOD Devghar. The nearest destination from the college, it is just 1.3 km from Desiri railway station. Devghar International Airport is around 15 km from the college. The world-famous Baba Baidyanath Mandir is just 8 km. The facilities of college are classroom, library, labs, Wi-Fi campus, computer lab, playground, canteen, medicinal garden, scholarship for meritorious students. The classroom is well furnished and spacious. Online learning facilities are provided to students during pandemic of COVID-19. College library has more than 2,000 volumes of books with reading room facilities for students and online e-journal and e-books access. The college has 13 well-equipped labs with managed ventilation and fire safety. Also individual workstation for students, implemented strict lab safety rules, and all the labs have centralized commercial gas supply. Glimpse of some still lab pictures with various equipments are
Computer labs have computers with latest configuration with Wi-Fi, and whole campus is having secured Wi-Fi connection. Various cultural activities organized by college are Sports Day, Saraswati Puja, Pharmacy Day, Independence Day, Teachers Day, Plantation Day, as well as induction program. Thank you so much for watching this video. You can expect each speaker to have the floor for about an hour, and we'll conduct a short question and answer session at the end of each session. If you have any questions during the webinar, please type them into the chat window and we'll address them during the question and answer session. And if you miss anything, please don't worry. This session is streaming live on YouTube platform as well. By the end of the time today, we hope you all feel more comfortable and confident about the ways of adapting to life during COVID times. Let us move ahead with the session. I would like to welcome our first guest speaker for the day, Shri Girish Tripathi sir. Though Das sir has already introduced him very well, but we'll go for a brief introduction about the achievements of sir. Sir is currently working as Pro Vice Chancellor in Sri Krishna University, Chhatarpur, MP. He is recipient of the Outstanding Leadership Awards by Asian Education Awards 2021, and also won Excellent Academic Performance 2020 in his entire university. He is also working as Associate Professor in Department of Pharmacy, Sri Krishna University, Chhatarpur. He is former Director of Femtex Pharma Private Limited and Associate Partner of Cambridge Montessori School. And he has an overall experience of more than 10 years of teaching. Thank you very much, sir, for joining us today. Without taking much time, I would hand over the platform to Girish Tripathi, sir. Sir, I would request you to please continue the session further. Thank you, sir. Am I audible? Yes, yes, sir. Yes, sir. So I would like to deliver my lecture in Hindi so that everyone could understand about the COVID-19 vaccine. बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। जी सर, it would be much more comfortable for them. बहुत अच्छा रहेगा सर, बहुत अच्छा रहेगा। तो परम आदरणीय डॉक्टर BL दास जी, चेयरमैन ओम सदाशिव चैरिटेबल ट्रस्ट and also the Dean Om Sadashiv College of Pharmacy, Shri Udit Kumar Dev ji, Secretary Om Sadashiv Charitable Trust, Shri Santosh Kumar Jha ji, Vice Principal Om Sadashiv College of Pharmacy, स्निग्धा जी, डॉक्टर शैलेंद्र जी जो हमारे सेकंड स्पीकर हैं इसके, एसोसिएट प्रोफेसर निर्मला कॉलेज ऑफ फार्मेसी से, तो सभी का स्वागत है। सभी रेस्ट ऑफ टीचिंग फैकल्टीज, स्टूडेंट्स, सभी लोगों का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। और मेरा बड़ा सौभाग्य है कि BL दास जी ने जो मेरे लिए बोला वो मेरे लिए बड़ा सौभाग्य का, मैं इस लायक तो अपने आप को नहीं समझता, अभी सभी लोग लर्निंग स्टेजेस पे हैं, लेकिन आपका इस तरह से वक्तव्य कहना मेरे लिए बहुत ही अच्छा अनुभव लेके आया है। और आज हम कोविड-19 के बारे में डायरेक्टली बात करते हैं, अधिक समय इसमें न लगाते हुए। सो अब मैं स्क्रीन शेयर करता हूं और उसको अपन प्रारंभ करते हैं। So I think screen is visible to all of you. Yes, sir. Yes, Okay. yes, sir. yes, it is visible. Sir. So today I'm going to deliver a short webinar on frequently asked questions on coronavirus COVID-19 vaccines. So this is disclaimer. चूंकि आपदा प्रबंधन कानून लागू है, इसके अलावा भी अपने मन से कुछ भी कहने पर यह संभावना है कि आप जो रिलायबल है, जो ऑथेंटिक है, उस जानकारी से हट जाएं। तो मेरा पूरा प्रयास है कि इस पूरे प्रेजेंटेशन में सारी चीजें ऐसी हो जो रिलायबल सोर्स से ऑथेंटिक हो। तो इसलिए मैंने अपने मन से कुछ इस वेबिनार में नहीं रखा। तो जितने भी इमेजेस, फैक्ट्स और जितने भी डाटा हैं या जो भी लॉजिक दिया गया है, ये टोटली डिपेंड करता है जो भी WHO और जो दूसरी ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं मेडिकल की या हेल्थ कैटेगरी की, उनके रिलायबल सोर्सेज से
ये सारे फैक्ट्स या इमेजेस ये सब लिए गए हैं। और इस वेबिनार का उद्देश्य है कोविड-19 वैक्सीन के बारे में एक प्रॉपर आपको एक साइट मिल जाए, एक छोटी सी दृष्टि, एक छोटी सी चीज आपको समझ में आ जाए कि कोविड-19 वैक्सीन क्या है, और जो भ्रांतियां हैं कि भाई वैक्सीन लगवाना चाहिए कि नहीं लगवाना चाहिए, उसमें एक टेक्निकल साइंटिफिक हम पहलू पर विचार कर सकते हैं। और इसमें किसी भी तरह का कोई भी जो लॉजिक है वो क्लेम नहीं किया गया है, ना कि ऑथर की तरफ से और ना प्रेजेंटर मेरी तरफ से। सो इट इज जस्ट ओरिजिनेटेड फ्रॉम देयर रिलायबल रिसोर्सेज। इमेजेस जो यूज की गई इस प्रेजेंटेशन में, दे आर जस्ट टेकन डायरेक्टली फ्रॉम द इंटरनेट एज दे आर। इसमें भी कोई छेड़खानी नहीं की गई है, एंड दे आर फ्रॉम द रिलायबल सोर्सेज, इट मे बी नोन एंड अननोन। सो देयरफॉर बिब्लियोग्राफी जो है वो इसमें प्रोवाइड नहीं की जाए। तो सबसे पहले हम कोरोना वायरस की वैक्सीन को समझने के पहले ये समझ लेते हैं कि एक बाहरी तौर पर कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर है कैसा। कोरोना वायरस सदियों से यहाँ पर रहा है, और कोरोना वायरस में बहुत सारे वायरस हुए हैं। इसमें एक आपने सुना होगा मर्स कोव वायरस है, फिर सार्स कोव वायरस हुआ, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम सार्स कोव, तो सार्स कोव 1 हुआ और अब सार्स कोव 2 हुआ। और इसको पूरा कोविड-19 इसलिए बोलते हैं क्योंकि इट इज कोरोना वायरस डिसीज 19 2019 में दिसंबर में डिस्कवर हुआ सर, तो इसलिए इसका नाम इस तरह से रखा गया। सो एक वायरस फैमिली का है, और वायरस फैमिली में अगर हम देखें तो आप स्क्रीन पर देख सक रहे होंगे कि जो स्ट्रक्चर होता है नॉर्मली, तो एक आउटर शेल होती है और अंदर उसका जो भी न्यूक्लियर मटेरियल है वो रहता है। तो अंदर की तरफ आप देखेंगे तो न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन है, यानी एक ऐसा प्रोटीन है जो आरएनए के चारों तरफ एक मतलब रखता है, ताकि आरएनए है वो बहुत सेंसिटिव मैक्रोमोलिक्यूल होता है तो नष्ट ना हो जाए। तो ये प्रोटीन हो गई। इसके बाद बाहर मेम्ब्रेन प्रोटीन होती है और एनवेलप प्रोटीन होती है। तो मेम्ब्रेन प्रोटीन एक प्रोटीन प्रोवाइड करती है न्यूक्लियर और जेनेटिक मटेरियल को, ताकि वो सुरक्षित रहे। इसके बाद आप देखेंगे तो हीमोग्लोबिन स्टोरेज जो है वह इसकी सरफेस पे पाया जाता है, और एक महत्वपूर्ण ग्लाइकोप्रोटीन पाया जाता है, इसे स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। इसमें हीमोग्लोबिन स्टोरेज का जो रोल है वो यही रोल है कि जब ये सेल पे अटैक करता है तो सेल में ये परमिशन को बढ़ाता है, सेल के अंदर आपका कोरोना वायरस घुस सके, इसके लिए यह एंजाइम बहुत आवश्यक होता है। ये फ्लेक्सिबिलिटी मेम्ब्रेन की बढ़ा देता है। दूसरा आपका स्पाइक प्रोटीन है, स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन है, जो आपको स्पाइक या कांटे की तरह इसमें दिख रहा होगा। तो स्पाइक प्रोटीन जो है वह है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ACE2 के रिसेप्टर्स में बाइंड करके और अपनी एंट्री को अंदर की तरफ फैसिलिटेट करता है। तो एक बेसिक स्ट्रक्चर है कोरोना वायरस का। ये उसी का दूसरा फॉर्म है, वो 3D स्ट्रक्चर था, ये 2D में मैंने आपको दिखाया ताकि आप थोड़ी और अच्छे से समझ सकें। सो न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन जो मैंने अंदर बताया था, इट कैन बाइंड टू द आरएनए जीनोम, तो न्यूक्लियोकैप्सिड पूरा बन जाता है। उसके बाद आपका स्पाइक प्रोटीन है, so it is critical for binding of host cell receptors to facilitate entry of host cell. So ACE2 receptors में जो बाइंड होता है वो आपका स्पाइक प्रोटीन होता है। उसके बाद एनवेलप प्रोटीन है जो बाहर की तरफ है, और अंदर मेम्ब्रेन प्रोटीन पाया जाएगा। तो एक बेसिक स्ट्रक्चर है एक कोरोना वायरस का। अब कोविड-19 वैक्सीन को समझने के पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर एंट्री करता कैसे है। तो आप को देखेंगे आप तो नंबर 1 से इसको डिजाइन किया गया नंबर 10 तक। तो नंबर 1 पर यहाँ पर आप देखेंगे तो ACE2 रिसेप्टर्स आपको दिख रहे हैं। ACE2 रिसेप्टर बाइंडिंग साइट होती है, जिस बाइंडिंग साइट में कोई भी कोरोना वायरस जो है वो बाइंड करता है। तो ACE2 रिसेप्टर्स और जो आपका स्पाइक प्रोटीन है, इनका लॉक और की तरह का सिस्टम होता है। सो एस जो आपका स्पाइक प्रोटीन होता है, इसमें 2 सब यूनिट होती है, S1 सब यूनिट और S2 सब यूनिट। सो बेसिकली जो S2 सब यूनिट है वो ACE2 से रिसेप्टर से जुड़ता है। उसके बाद जो S1 यूनिट है वो ट्रांस अमीनो प्रोटीज सेराइन 2 एक यहाँ पर पाया जाता है सरफेस पर, उससे बाइंड करता है। इन दोनों के बाइंड करने से आपकी सेल मेम्ब्रेन की परमिबिलिटी जो है वह कोरोना वायरस को एक्सेस करने के लिए मिल जाती है। और इस तरह से कोरोना वायरस आप देखेंगे 2 नंबर पे कि वह अपना वायरल जीनोम है उसको रिलीज कर देता है। रिलीज करने के बाद जो आरएनए जो आपका जेनेटिक मटेरियल है वह एक्सटेंड होगा 5:3 लाइन में, और राइबोसोम से अटैच कर देगा।
उसके बाद आरएनए भी रेप्लिकेट करता है, और आरएनए रेप्लिकेट करते करते नंबर 6 पे आप देखेंगे कि यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन होता है, यानी आरएनए में जो प्रोटीन को बनाने की कोडिंग है वो डिकोड होती है। जो सेल के अंदर पर जो भी रिसोर्स मटेरियल है जिनसे प्रोटीन बनाया जा सकता है, उसका आरएनए जो है वह इस्तेमाल करता है, और विभिन्न प्रकार के प्रोटीन्स जो पूरे कोरोना वायरस को बनाने के लिए आवश्यक होते हैं वो इससे बनाए जाते हैं। नंबर 7 में आप देख सकते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन हुआ, ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद न्यूक्लिक एसिड बना, स्पाइक प्रोटीन बना, मेम्ब्रेन एनवलप बना, और जो भी एसेसरीज और होती हैं जो कलर्ड में आपको दिख रही होंगी बार में। तो अब ये सारे उसके कोरोना वायरस को बनाने के जितने भी रॉ मटेरियल आप बोल सकते हैं या जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो बन चुके हैं। इसके बाद ये सेल के ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का इस्तेमाल करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाने के बाद ये धीरे धीरे वहां पर असेंबल होते हैं। उसके बाद जाने के बाद गोल्जी बॉडी में जाएंगे। गोल्जी बॉडी में भी जो रेस्ट ऑफ द मटेरियल है वह इसका बनता है, और इसका नंबर 8 पे आप देखेंगे रिलीज होता है। तो एक आपका आउटर शेल बन गया, और यहाँ से न्यूक्लिक एसिड जो बनता है, और आरएनए जो आपका मतलब मल्टीप्लाई करता है वह न्यूक्लिक एसिड बन के और फिर बीच की तरफ मर्ज होता है, और इस तरह से पूरा 9 नंबर में देखेंगे कि वायरस जो है वो मैचुरेट हो जाता है। उसके बाद एक्सोसाइटोसिस की मेथड को इस्तेमाल करते हुए 10 नंबर में ये वायरस निकल जाता है। तो इस तरह से एक वायरस का रेप्लिकेशन होता है। तो जब किसी भी तरह की ड्रग जो है वो यूज की जाती है कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए, तो इन्हीं साइट्स पे की जाती है। अलग अलग जो रेमडेसिविर है या कई अन्य तरह की जो ड्रग्स हैं वो इनमें से भी किसी एक चैनल के बीच में कार्य करती है। कोई ड्रग्स ऐसी हो सकती है जो आरएनए के रेप्लिकेशन को रोक दे, तो कोई ड्रग ऐसी हो सकती है जो आरएनए के ट्रांसक्रिप्शन से जो आपके इसके एसेसरीज जो बन रही हैं, न्यूक्लिक एसिड बन रहा है, स्पाइक प्रोटीन बन रहा है, इनको बनाना बंद कर दे। यहीं कहीं हमें ये भी देखना है कि वैक्सीन का क्या अप्रोच हो सकता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम ये जान लें कि कोई भी कोरोना वायरस है वह किस तरह से रेप्लिकेट करता है। तो ये प्रोसीजर हमें पता चले, और इसमें अगर एक अपन कॉमन सेंस लगाएं तो ये देखें कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जिससे ये एंट्री कर लेता है। तो एक आपको दिख रहा होगा स्पाइक प्रोटीन, कि हाँ भाई स्पाइक प्रोटीन बहुत जरूरी है। स्पाइक प्रोटीन इसलिए जरूरी है कि स्पाइक प्रोटीन ही वो ऐसा इसका कंपोनेंट है जो इसको सेल में एंट्री दिलाता है। तो कुछ ना कुछ ऐसा करना होगा कि स्पाइक प्रोटीन जो है वो ACE2 रिसेप्टर से जुड़ ना सके। तो इसको हम अभी आगे देखेंगे जी। तो ये हमने एंट्री देखी। अब मैंने आपको जैसा बताया कि कई तरह की दवाओं का इस्तेमाल भी किया जा सकता है कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए। इसके अलावा आपने सुना होगा कि आजकल वैक्सीन लगी है। वैक्सीन के बारे में एज अ फार्मासिस्ट और फार्मेसी कॉलेज के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अच्छी तरह से समझते होंगे कि वैक्सीन जो है वह भी एक एज अ ट्रीटमेंट और एक प्रिवेंटिव मेजर्स के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए। तो हम पहले ये समझ लेते हैं कि इम्यूनिटी आखिर है क्या। तो आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि मैंने टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी जो है वो इस डायग्राम में आपको दिखाई हुई है। तो 2 तरह की इम्यूनिटी होती है, एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी और एक इननेट इम्यूनिटी। तो इननेट इम्यूनिटी वो होती है जो आपके राइट हैंड साइड में आप देखेंगे जो बर्थ से होती है, यानी आप जब पैदा होते हैं तो आपके शरीर में पहले से वह इम्यूनिटी उपस्थित रहती है। इसे इननेट इम्यूनिटी कहते हैं। दूसरी इम्यूनिटी जो होती है वो एक्वायर्ड होती है। एक्वायर्ड का मतलब प्राप्त करना। तो जब आप पैदा हो जाते हैं उसके बाद पूरे जिंदगी भर जो इम्यूनिटी डेवलप होती है उसे एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी 2 प्रकार की है, आप नीचे के सेक्शन में देखेंगे। तो एक्टिव इम्यूनिटी है और पैसिव इम्यूनिटी है। एक इम्यूनिटी एक्टिव है और एक पैसिव। और जैसा कि इसमें स्पष्ट है, इसका अगर अपन शाब्दिक अर्थ लेंगे तो पैसिव का मतलब होता है कि कहीं और से आपको दिया गया है। तो पैसिव इम्यूनिटी वो होती है जब आप कहीं और से वो इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। तो इम्यूनिटी तो हम जानते हैं कि एंटीबॉडीज वगैरह से ही इम्यूनिटी बनती है। एंटीबॉडीज जो आपके फॉरेन मटेरियल पे हमला करते हैं, वायरस बैक्टीरिया पे हमला करते हैं, उसी को हमने इम्यूनिटी का नाम दे रखा हुआ है। सो पैसिव इम्यूनिटी मतलब बाहर से दी गई। तो ये पैसिव इम्यूनिटी भी 2 तरह की होती है, एक नेचुरल होती है, एक आर्टिफिशियल होती है। नेचुरल इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी कहलाती है जब कोई भी मदर अपने किड्स को, चाइल्ड को ब्रेस्ट फीडिंग करती है तो मिल्क के थ्रू, ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू जो एंटीबॉडीज मदर के बॉडी से जो चाइल्ड की बॉडी में जाता है वो नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी कहलाएगी। मतलब उसके शरीर में खुद से वो नहीं बनी, मदर से नेचुरली वह मिल्क के थ्रू ट्रांसफर भी है, तो नेचुरल है बट पैसिव है, बर्थ नहीं। दूसरा होता है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल में होता है कि भाई एंटीबॉडीज उसके शरीर में अगर नहीं है, कम है,
तो हम क्या करते हैं कि कहीं और से एंटीबॉडीज मेडिसिन के रूप में बनाकर फिर हम उस पेशेंट को लगाते हैं। तो ये आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी है। अब हम आ जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, तो वहां पर आप देखेंगे कि एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी ये है कि आपके बॉडी में बर्थ से तो वो इम्यूनिटी नहीं थी, लेकिन हम कुछ ऐसा करेंगे, हम कुछ ऐसे इन्फेक्शन, माइल्ड इन्फेक्शन शरीर को प्रोवाइड करेंगे कि शरीर में एक एंटीजन के खिलाफ एक रिस्पॉन्स पैदा हो जाए और आपकी एंटीबॉडीज उससे लड़ने के लिए बनने लगे। सो एक्टिव इम्यूनिटी भी दो तरह की है, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी और आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। सो नेचुरल ये है कि आप नेचुरली अपनी जो लाइफ स्टाइल जीते हैं उसमें आपको कई तरह के इन्फेक्शंस होते हैं नेचुरली, तो वो इन्फेक्शन जब शरीर के अंदर आते हैं, रिकॉग्नाइज्ड होते हैं और उनके खिलाफ जो एंटीबॉडीज बनती हैं उसको बोलते हैं नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। अब आते हैं मेन वैक्सीन वाले फैक्टर पे, तो इसका दूसरा पार्ट है एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी, यानी हम रिस्पॉन्स देंगे, हम इन्फेक्शन क्रिएट करेंगे बॉडी में, लेकिन आर्टिफिशियल, यानी हम ही उस इन्फेक्शन को बनाएंगे, उसको हम एटीन्यूटेट करें बैक्टीरिया को, वायरस को, या उसको किल्ड करें। तो हम खुद ही इन्फेक्शन को बनाएंगे आर्टिफिशियली और उसको जब बॉडी में इंट्रोड्यूस कराते हैं तो उसके रिस्पॉन्स में जो एंटीबॉडीज बनती हैं वो आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी बनती है। तो इस तरह की इतनी तरीके हैं जिनसे आप शरीर में इम्यूनिटी को डेवलप कर सकते हैं। ये इसका एक छोटा सा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। तो आप देखेंगे एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव में आप देखेंगे एक बैक्टीरिया बना हुआ है, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा तो आपको वो इम्यूनिटी आपको जनरेट होगी। इस तरह पैसिव में आएंगे तो मदर का आपको दिख रहा है, और ये आप देखेंगे आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी में मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को लगाई जा रही है। लेकिन हमारा मुख्य फोकस जो है वह है आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी में, दैट इज वैक्सीन। तो हम सेकंड पार्ट में इसमें आएंगे। नहीं, अभी तक तो नहीं है, नेटवर्क नहीं रहता है ना यहाँ पे, बाहर निकलेंगे तो आ जाएगा। अब इस स्क्रीन में आप देख पा रहे होंगे कि मैं अब आपको बताने वाला हूं कि जो आप एक्टिव पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करने वाले, मतलब आप खुद ही इन्फेक्शन प्रोवाइड करेंगे बॉडी को ताकि उसके अंदर एंटीबॉडीज बने। तो इसमें जो सबसे मेन जो फंक्शन है वो वैक्सीन का है, टीका जिसको बोलते हैं। तो वैक्सीन हम बॉडी में लगाते हैं और वैक्सीन लगाने से उसके अंदर एंटीबॉडीज जनरेट होती है। तो कितने प्रकार की वैक्सीन होती है आपके डिस्प्ले में दिख रहा होगा। सबसे पहली जो वैक्सीन तरीका है बनाने का और टाइप से, वो लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन है। तो लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन में क्या रहता है कि हम होल वायरन यूज करते हैं, यानी पूरा का पूरा वायरस जो है उसकी बॉडी के यूज करते हैं, और वो एटीन्यूटेड होता है, मतलब पूरी तरह से डेड नहीं होता है, वो हल्का सा एटीन्यूटेड होता है, यानी वो डिसीज कॉज नहीं कर पाएगा, या करेगा तो माइल्ड करेगा। तो इस तरह का फिक्स्ड पॉपुलेशन ऑफ वायरस को लेकर सूटेबल रूप में हम बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं। वहां पर यह एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल से इंटरेक्ट करता है। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स वो सेल्स होती हैं जो एंटीजन को लेकर और एंटीबॉडीज को एक सिग्नल देंगी ताकि एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो। सो एक तरीका आपका ये होता है लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन का। दूसरा इसी में एक प्रकार होता है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन बिल्कुल लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन की तरह होता है, लेकिन इस बार हम उसको पूरी तरह से किल कर देंगे, यानी ये किसी भी तरह की पैथोजन एक्टिविटी शो नहीं कर पाएगा। सिमिलर है, आप देखेंगे फर्स्ट और सेकंड जो कॉलम है उसमें, और उसमें फर्क इतना होगा कि इनएक्टिवेटेड वैक्सीन जो है किल्ड होती है। और फिर से पूरा प्रोसीजर वही है, सूटेबल फॉर्म में आप इसको लेंगे, बॉडी में लगाएंगे, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल इनको इनके एंटीजन को देखकर अपने आप को एक्सप्रेस करेगी और शरीर के अंदर एंटीबॉडीज बनने लगेगी। तीसरे फॉर्म में अपन आएंगे, सो दैट इज रेप्लिकेटिंग वायरल वेक्टर वैक्सीन। वेक्टर वैक्सीन आप यूज कर रहे हैं। तो वेक्टर वैक्सीन में हम क्या करते हैं कि जिस वायरस के खिलाफ हमें वैक्सीन बनानी है, हम उस वायरस को यूज नहीं करते, हम उसी तरह का सिमिलरली दूसरा वायरस यूज करेंगे जो आपके जो भी होस्ट सेल है उसमें किसी भी तरह का डिसीज कॉज नहीं करता। लेकिन हम क्या करेंगे, उसको थोड़ा सा जेनेटिकली मॉडिफाइड, ये एग्जांपल जैसे आप देखेंगे कि कोविशील्ड में किया गया है, तो जेनेटिकली थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे तो क्या होगा कि जो इसका सरफेस की प्रॉपर्टी है, हमने जो वायरस लिया है वो टोटली वो वायरस नहीं है जिसके खिलाफ वैक्सीन बनानी है, वायरस कोई और है, वो डिसीज कॉज नहीं करता है, उसको जेनेटिकली मॉडिफाई करेंगे। तो क्या होता है, जेनेटिकली मॉडिफाई करने से थोड़े से सरफेस प्रोटीन जो है वह उस वायरस के तरह बन जाते हैं जिसके खिलाफ हम वैक्सीन बनाना चाहते हैं। रेप्लिकेटिंग वायरल वेक्टर वैक्सीन का मतलब है कि हम उसे प्रॉपर्टी देंगे कि वो डिवाइड कर सके। सर कोविशील्ड और कोवैक्सीन में क्या डिफरेंस है? सर
कोविशील्ड वैक्सीन और कोवैक्सीन में क्या डिफरेंस है? सर मैं प्रेजेंटेशन पूरा कर लूं फिर मैं आपको इसमें पूरा बता दूं। तो ये रेप्लिकेटेंट वायरल वैक्सीन है, मतलब ये रेप्लिकेट करता है और आगे की प्रोसेस वही है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल बनेंगी और उसके बाद वो इसको प्रेजेंट करके और वो एंटीबॉडीज का निर्माण करेंगे। चौथे नंबर पे अपन आते हैं तो नॉन रेप्लिकेटिंग वायरल वेक्टर वैक्सीन, यानी हम आप क्या करेंगे कि हम वायरस दूसरा ले रहे हैं, उसमें हम जिस वायरस का वैक्सीन बनाना चाह रहे हैं उसका हम जेनेटिक मटेरियल लेंगे, इससे उसके सरफेस पे कुछ चेंजेस आएंगे, कुछ ऐसे सरफेस में कुछ ऐसे प्रोटीन होंगे जो उस वायरस के होंगे या उस वायरस की तरह होंगे जिसके लिए हम वैक्सीन बनाना चाहते हैं। अगेन हम बॉडी में इंट्रोड्यूस कराएंगे, तो जो सरफेस प्रोटीन वायरल प्रोटीन के थे उस वायरस के थे जिसके खिलाफ आप वैक्सीन बनाना चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं, उसको एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल रिकॉग्नाइज करेगी और फिर से एंटीबॉडीज बने। इसके अलावा आजकल जो मॉडर्ना और फाइजर वगैरह में टेक्निक यूज कर रहे हैं उसमें हम क्या करते हैं कि जैसे हम डीएनए वैक्सीन हमने ली, डीएनए वैक्सीन में हम क्या करते हैं कि डीएनए का पार्ट लेके तो सबसे पहले हमने आरएनए लिया, यानी कोविड-19 का आरएनए लिया, उस आरएनए से हमने रेप्लिकेट कर डिसीज कॉजिंग एक छोटा सा पोर्शन डीएनए वैक्सीन का बनाया। इसके बाद इसको हम आगे इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो होता क्या है कि जब ये डीएनए का पार्ट जो है प्लाज्मेट है जो अब अंदर जाएगा, तो अंदर जाने के बाद ये होस्ट की मैकेनिज्म को यूज करके कुछ प्रोटीन पार्ट बनाएगा, लेकिन ये चूंकि पूरा वायरल प्रोटीन नहीं है तो असेंबल नहीं हो सकता, लेकिन आपके वायरस के कुछ प्रोटीन पार्ट बन जाएंगे। इन प्रोटीन पार्ट को एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल रिकॉग्नाइज कर लेगी और उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बना लेगी। जब आपका रियल वायरस अटैक करेगा तो एंटीबॉडीज ऑलरेडी वहां पर अवेलेबल रहेंगी और वो उसको अटैक करके नष्ट कर देंगे। इसी तरह से आप डायरेक्टली पूरा का पूरा आरएनए यूज करना चाहते हो तो आप आरएनए लें, कोविड-19 का आरएनए लें, उसको कुछ पोर्शन में तोड़े और केवल इतना पोर्शन आप उसका यूज करें जिससे कुछ स्पाइक प्रोटीन वो बना सके। इसको आप अंदर यूज करेंगे तो ये अपने ही होस्ट की मैकेनिज्म को यूज करके, उसकी मशीनरी एक्सेसरी को यूज करके कुछ पार्ट बनाएगा जिन्हें हम एंटीजन कहते हैं। असेंबल नहीं हो सकते वो, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल को रिकॉग्नाइज करेगा और एंटीबॉडीज आगे बनेगा। और लास्ट वन है सब यूनिट वैक्सीन, यानी कि हम ना वायरस यूज करेंगे, ना उसका डीएनए यूज करेंगे, ना आरएनए यूज करेंगे, बल्कि हम उसके पार्ट यूज करेंगे। जैसे हम स्पाइक प्रोटीन के टुकड़े लेकर और उसका अगर वैक्सीन बनाते हैं तो इन स्पाइक प्रोटीन को एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल अगेन रिकॉग्नाइज कर लेंगे तो फिर एंटीबॉडी बन जाएगी। तो अप्रोचेस बहुत सारे हैं वैक्सीन को बनाने की, लेकिन थोड़ा बहुत प्रोज एंड कॉन्स इसमें चलता है। किसी का इफेक्टिव है, किसी का प्रोसेस उतना इफेक्टिव नहीं। सो ये स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि मैंने एक और कॉल उसमें टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है, टाइप ऑफ वैक्सीन आपको ऊपर दिख रही होगी और ये कैसे कार्य करता है। सो जो एडवांटेज डिसएडवांटेज है वो भी मैंने इसमें दे रखे हैं। सो जैसे फर्स्ट में आप जाएंगे, सो दिस वैक्सीन यूजेस आरएनए और डीएनए मॉलिक्यूल्स, आरएनए और डीएनए मॉलिक्यूल्स को यूज करता है। एडवांटेज है कि इजी है, डिजाइन बहुत आसानी से हो सकता है, लेकिन इस तरह की टेक्निक कभी पहले हुई नहीं। मॉडर्ना और जो इनोवियो है ये इस तरह की वैक्सीन बन रही है। दूसरे में जैसे मैंने बताया कि वीकेंड या एटीन्यूटेड जो है, सो एटीन्यूटेड में वीकेंड वर्जन ऑफ एक्चुअल वायरस को यूज करते हैं और इसमें भी काफी जो है वैक्सीन वो बन रही है। फिर नेक्स्ट अपन आएंगे इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, यानी पूरी तरह से वो इनएक्टिवेटेड होगा, किल्ड होगा और इसलिए ये कहीं भी तरह से आपको क्या है डिसीज कॉज नहीं कर सकता, लेकिन ये ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहती। फिर आप आएंगे यहाँ पर, तो इस वैक्सीन में जो मैंने बताया था कि सरफेस के कुछ पार्ट पीसीज यूज होते हैं। और लास्ट वन इज योर वेक्टर वैक्सीन। नाउ वैक्सीन को बनाने के लिए इन्हीं तरह के अप्रोचेस का इस्तेमाल किया गया है। तो आप देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड में मैंने अप्रोचेस बना के रखे हुए, तो ऊपर आप देखेंगे इनएक्टिवेटेड और एटीन्यूटेड वायरस, यानी पूरा वायरल आप यूज करें, उसे या तो किल्ड कर दें या इनएक्टिवेटेड कर दें, एटीन्यूटेड कर दें। सो इसमें होता क्या है कि पूरा होल वायरस जो है वो बॉडी के अंदर जाएगा, उसको एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल रिकॉग्नाइज करेंगी और उससे फाइट करने के लिए, उसको ब्लॉक करने के लिए एंटीबॉडीज बनने लगेंगी। तो सिनोफॉर्म और सिनोवैक की जो वैक्सीन है सार्स-कोव-19 की, वो इस तरह से इस मैकेनिज्म से बन रही है। और पुराने समय में कोलेरा, पोलियो, एमएमआर, येलो फीवर जो है वो इस तरह से बना। सो आप जिस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे, अलग अलग वैक्सीन जो है वो अलग अलग प्रकार से बनाई गई है। अब
एक प्रश्न और उठता है कि साहब पहले भी कई वैक्सीन बनी है, पोलियो की वैक्सीन है, कोलेरा की वैक्सीन भी है, तो ऐसा क्या मेजर डिफरेंस है इस कोविड-19 वैक्सीन में और उन वैक्सीन में? आप न्यूज़ चैनल्स में, न्यूज़पेपर्स में भी देखते होंगे कि काफ़ी डाउट्स जो है वह इस वैक्सीन के बारे में लोगों के मन में है। तो हम ये समझते हैं यहाँ पर कि क्लासिकल वैक्सीन जो बनती है और कोविड-19 वैक्सीन बनी है, उसके बनने के प्रोसीजर में आखिर ऐसा क्या इतना ज़्यादा डिफरेंस है? तो पहली चीज़ ये थी कि कोविड-19 जो है यह बहुत तेज़ी से स्प्रेड कर रहा था, नॉट ओनली इन इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो जब इस तरह से कोई भी क्राइसिस होती है, कोई पेंडेमिक होता है, तो हमें उस पेंडेमिक को रोकने के लिए मेडिसिन्स को सर्च करने और वैक्सीन को बनाने का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। तो होता क्या है कि क्लासिकल वैक्सीन बनाने के लिए जो स्टेजेस होते हैं, प्री क्लिनिकल स्टेज, फेज 1 ट्रायल, फेज 2 एंड फेज 3, और उसमें जो वॉलंटियर्स यूज होते हैं और जो टाइम लगता है, उस टाइम को स्पीड अप किया गया कोविड-19 को बनाने के लिए। तो प्री क्लिनिकल स्टेज, फेज 1, फेज 2, फेज 3 में जो है, इसको बहुत तेजी से स्पीड करके और फिर इस वैक्सीन को अप्रूवल दिया गया, तो दैट इज कॉल्ड एज इमरजेंसी अप्रूवल। तो यह इमरजेंसी अप्रूवल है। तो जब इमरजेंसी अप्रूवल किसी को देते हैं, तो जो भी आपकी जो भी जानकारी है, जो भी आपकी रिसर्च है, वो एक स्पीड में की गई होती है। तो स्पीड में करने पर जो रिजल्ट्स हैं, उसमें कुछ साइड इफेक्ट्स वगैरह हल्के-फुल्के जो रहते हैं, वो प्रेजेंट करते हैं कुछ ज़्यादा इन कंपैरिजन टू द क्लासिकल वैक्सीन, क्योंकि क्लासिकल वैक्सीन में सफिशिएंट आपको टाइम मिला है, आपको जो भी प्रोज कॉन्स थे, जो एडवांटेज डिसएडवांटेज थे, उसको आपने स्टडी किया है, रेक्टिफाई किया है। लेकिन मानवता को बचाने के लिए और इतने बड़े स्तर पे इस पेंडेमिक को रोकने के लिए इस तरह की कोविड वैक्सीन का इमरजेंसी इस्तेमाल बहुत ही जरूरी था। इसलिए ये जस्टिफाई होता है कि इसका इमरजेंसी इस्तेमाल किया जाए और सब लोग इस वैक्सीन को लगाएं। अब जैसा कि अभी किन्हीं सज्जन ने प्रश्न पूछा था कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन में क्या अंतर है, तो मैं उसी पे आ रहा हूँ और मैं एक एक करके आपको बताता हूँ कि क्या डिफरेंस है। और सबसे मेन चीज़ ये है कि कई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चल पड़ी हैं, कई न्यूज़ चैनल्स चल पड़े हैं और अलग अलग तरह की इसमें जानकारियाँ जो हैं, वो इंडियन वैक्सीन जो है और बाहर की वैक्सीनों के बारे में आपने सुनी होंगी। तो सबसे मेन चीज़ है कि आपको ये पता होना चाहिए कि हम वैक्सीन के लिए जो जानकारी प्राप्त करें, वो केवल और केवल रिलायबल सोर्सेज से प्राप्त करें। तो वो वैक्सीन जिस भी ऑनर ने बनाई है, उस ऑनर की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ से जानकारी प्राप्त करें, या कुछ ऑथेंटिक सोर्सेज हैं, जैसे WHO की वेबसाइट है या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इंडिया की वेबसाइट है, यहाँ से जानकारी प्राप्त करें। तो सामने आप स्क्रीन पे देखेंगे, ये एक स्क्रीनशॉट है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का। ये भारत की वो कंपनी है जिसने कोरोना वैक्सीन जो है कोविशील्ड, जिसको हम बोलते हैं, ट्रेडमार्क है, उसको बनाया हुआ। तो जब अगर आप इस वेबसाइट को खोलेंगे तो इस तरह से आपको सामने दिखेगा और नीचे आप देखेंगे प्रोडक्ट इंसर्ट और प्रोडक्ट फैक्ट शीट जो है, आपको दो चीजें देखी। तो मैं अभी वेबसाइट में भी जाऊंगा, तो आपको कहीं से कोई जानकारी प्राप्त नहीं करनी, आप तो उनके रिलायबल सोर्स पे जाएं। वेबसाइट पे बहुत जानकारी दी हुई है जो आपके सारे कॉन्सेप्ट को वैक्सीन हेलो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सर थोड़ी सी डिस्टरबेंस है आपकी प्रेजेंटेशन में, आपकी आवाज फिर से डिस्टर्ब्ड आ रही है सर। हेलो। यस सर। एक्सट्रीमली सॉरी, नेटवर्क जाने के कारण इट्स ओके सर। तो ये आप देखेंगे, ठीक है। तो आप ऑफिशियल वेबसाइट को क्लिक करेंगे, तो आपको कुछ इस तरह से आपको दिखेगी।
सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की वेबसाइट है। तो आपको हमेशा जो भी रिलायबल सोर्सेज हैं वहां से जानकारी प्राप्त करना चाहिए। तो अब जैसे मान लीजिए आपको कोविशील्ड के बारे में जानकारी प्राप्त करनी, आप अपना वेबसाइट को खोल सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे CHADOX1N COVID-19 कोरोना वायरस वैक्सीन रिकॉम्बिनेंट लिखा हुआ है। तो CHADOX1N को तो एक्चुअली क्या है कि ये भी एक वेक्टर वैक्सीन है, यानी कोविशील्ड को कैसे बनाया गया है, तो इसमें क्या है, एडिनो वायरस को लिया गया। एडिनो वायरस एक तरह का वायरस है जो चिंपैंजीज में नॉर्मल कोल्ड का जो है डिसीज कॉज करता है, ठीक है। और इन्होंने क्या किया कि एडिनो वायरस को वहां से लिया। एडिनो वायरस को लेने के बाद अब एडिनो वायरस जो है वो चिंपैंजीज में तो डिसीज कॉज करता है, लेकिन ह्यूमन बीइंग में उसको कोई डिसीज पैदा नहीं करेगा। उसका खुद का अपना एक RNA होता है। उस RNA को उन्होंने लिया और कोरोना वायरस कोविड-19 वायरस का RNA का वो पोर्शन निकाला जो स्पाइक प्रोटीन बनाता है। उस RNA के उस पोर्शन को लेके इन्होंने उसको आपके एडिनो वायरस के साथ उसको रिकॉम्बिनेंट किया, बनाया। तो अब क्या होगा कि आपके पास रहेगा तो एडिनो वायरस ही, लेकिन चूंकि उसमें स्पाइक प्रोटीन को बनाने का जो जेनेटिक मटेरियल है वो डाल दिया गया है, तो एडिनो वायरस के ऊपर स्पाइक प्रोटीन बन जाए। इसके बाद जब भी सूटेबल मेथोडोलॉजी यूज करके इसकी वैक्सीन लगाई जाएगी और कोविशील्ड वैक्सीन को आपको इंट्रोड्यूस किया जाएगा, तो आपके शरीर के अंदर एडिनो वायरस घूमने लगेंगे। ये वो एडिनो वायरस होंगे जिनके बॉडी सरफेस पे स्पाइक प्रोटीन इन स्पाइक प्रोटीन को जब एंटी सेल रिकॉग्नाइज करेंगी तो उनको ये लगेगा कि भाई फॉरेन मटेरियल आया, और स्पाइक प्रोटीन को रिकॉग्नाइज करके उस स्पाइक प्रोटीन को ब्लॉक करने के लिए कुछ एंटीबॉडीज बनेंगे। ये एंटीबॉडीज आपके पूरे शरीर में फैलने लगेंगे। एडिनो वायरस चूंकि डिसीज कॉज नहीं करता, इसलिए आपको अगर फीवर भी आएगा तो माइल्ड आएगा, कोई भी डिसीज नहीं। अब भविष्य में जब भी कोरोना वायरस आप पे हमला करेगा, तो चूंकि उस स्पाइक प्रोटीन को ब्लॉक करने के लिए एंटीबॉडीज बने हुए, तो कोरोना वायरस जब आएगा तो उसके चूंकि सरफेस पे स्पाइक प्रोटीन है, तो वो कोरोना वायरस को पे हमला करेगा और कोरोना वायरस को नष्ट कर देगा। तो ये एक अप्रोच है जो बनाई गई है। और CHADOX1 यानी चिंपैंजी का CH लिया गया है, तो CH एडिनो वायरस का AD लिया गया है, तो CHADOX चूंकि ऑक्सफोर्ड ने बनाया था, तो OX और ऑक्सफोर्ड कई वैक्सीन बना चुका है, तो ये और कोरोना की पहली वैक्सीन थी। सो CHADOX एंड कोविड-19 कोरोना वायरस। तो एस्ट्राजेनेका जो है वो एक वैक्सीन बनी थी, उसका वो टेक्निक जो है वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ट्रांसफर ली, यहाँ पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका के थ्रू, और उसी को फिर कोविशील्ड के रूप में बनाया गया। अब इसके बारे में अगर हमें डिटेल प्राप्त करनी है, आप प्रोडक्ट इंसर्ट पे क्लिक कर सकते हैं। प्रोडक्ट इंसर्ट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने PDF फाइल खुल जाएगी। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि मैं भी इसकी प्रेजेंटेशन बना के आपको बता सकता था, लेकिन अब आप खुद ही इसको देख सकते हैं, और उसके बाद जो भी रेगुलर अपडेट होंगे वो इसमें आ जाते हैं, तो आप आराम से इसको देखकर यहाँ पर काफी चीजें इसकी लर्न कर सकते हैं। अब आप मोटा मोटा तौर पे देखेंगे तो इसमें सारी चीजें दी हुई हैं कि क्या रिसर्च की गई, उसके बाद कितने एज ग्रुप में की गई है, कितने नंबर ऑफ पीपल यूज किए गए थे जिनके ऊपर रिसर्च की गई थी, और 4.4 में आप देखेंगे तो स्पेशल वार्निंग और प्रिकॉशंस भी दिए गए हैं कि भाई आपको कैसे इसको यूज करना है। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो देन 4.8 में अनडिजायरेबल इफेक्ट है कि भाई क्या एडवर्स इफेक्ट है जो हो सकते हैं। तो मैं आपके लिए टेबल इसकी ओपन कर देता हूँ। You can see this is the table of adverse drug reaction। यानी कई लोग ये सोचते हैं भाई हम वैक्सीन लगा लेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, तो उनके लिए मैंने खास तौर पर इस टेबल को खोल के रखा है, और मेड्रा के द्वारा ये बनाई गई है। मेड्रा जो है वो ICH या इंटरनेशनल काउंसिल फॉर हार्मोनाइजेशन ऑफ टेक्निकल रिक्वायरमेंट फॉर फार्मास्यूटिकल फॉर ह्यूमन यूज, जो एक अच्छी संस्था है, उसकी सब्सिडरी है। और मेड्रा का पूरा जो नाम है वह है मेडिकल डिक्शनरी फॉर रेगुलेटरी एक्टिविटीज। तो काफी अच्छी एक संस्था है। और टेबल के ऊपर आप देखेंगे तो डेफिनेशन दी हुई कि भाई अनकॉमन का मतलब कितने सैंपल में कितना एडवर्स इफेक्ट दिखता है। वो अनकॉमन है, कॉमन, वेरी कॉमन। तो वेरी कॉमन जो है साइड है। तो आप देखेंगे तो अनकॉमन यानी जो बहुत रेयर है वो है लिम्फा एडिनोपैथी, यानी आपकी लिम्फ नोड में सूजन हो जाए, बहुत ही अनकॉमन, इसको अवॉइड किया जा सकता है। सेकंड वन इज अनकॉमन डिक्रीज्ड एपेटाइट, भूख में थोड़ा सा कमी होने लगेगी। तो आप ऊपर से नीचे तक देखेंगे तो कोई भी ऐसा बहुत मेजर साइड इफेक्ट आपको इसमें नजर नहीं है।
तो ये एक सेफ्टी फीचर है जो बता सकता है कि हाँ भाई ये वैक्सीन जो है वो सेफ है। तो आप एक यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आप फिर से वेबसाइट पे आएंगे तो फैक्ट शीट को खोल सकते हैं। फैक्ट शीट जो है वो इंसर्ट है जो आपको प्रोडक्ट के साथ मिलता है। तो यहाँ भी आप इसको पढ़ के और जानकारी पूरी इसकी प्राप्त कर सकते हैं इस तरह से। तो ये हो गया आपका कोविशील्ड के बारे में। उसके बाद दूसरा जो वैक्सीन है हमारा कोवैक्सीन। तो अब हम कोवैक्सीन के बारे में आपको जानकारी प्राप्त करनी है। आप पुनः उसकी ऑफिशियल वेबसाइट को खोल सकते हैं। कोवैक्सीन जो है वह भारत बायोटेक के द्वारा बनाई गई है और DRDO का भी इसमें सहयोग रहा। तो इसमें भी आप इसको चेक कर सकते हैं। सो कोवैक्सीन इज इंडियाज इंडिजिनस कोविड-19 वैक्सीन। इट इज डेवलप्ड बाय भारत बायोटेक एंड ICMR। इनके द्वारा बनाई गई है और बायो सेफ्टी लेवल 3 में बनाई गई, मतलब काफी अच्छा इसमें ये रहा। और इस वायरस को जो है होल वायरल इनएक्टिवेटेड वायरोसेल्स यूज की गई। यानी जहां कोविड, आप याद कीजिए कोविशील्ड में हमने चर्चा की थी, तो कोविशील्ड किस तरह से बनाई गई थी? हमने दूसरा वायरस एडिनो वायरस लिया था। एडिनो वायरस को जेनेटिकली मॉडिफाइड किया था, स्पाइक्स प्रोटीन लगाने का प्रयास किया। कोरोना वायरस की तरह वो मिमिक कर रहा था, जो डुप्लीकेसी करके इसने हमारे बॉडी को छला और हमारी बॉडी में यह बताने की कोशिश की गई कि भाई ये तो क्या है, ये कोरोना वायरस है, कि वो था नहीं, तो एडिनो वायरस था। और इस तरह से वहां पर एंटीबॉडीज डेवलप होती। कोवैक्सीन में हम यूज करते हैं इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, यानी इसमें रियल वैक्सीन यूज करेंगे। पूरा वायरस कंप्लीट होल वायरस पूरा वायरस यूज करा जाता है, लेकिन इसको इनएक्टिवेटेड किया जाता है। इनएक्टिवेटेड करने कई तरीके हैं, केमिकली भी किया जाता है और हीट के द्वारा भी इसको किया जाता है। सो ये कोवैक्सीन का है। कोवैक्सीन नॉर्मली प्रेफर इसलिए की जाती है क्योंकि कोवैक्सीन का जो तरीका है ये बहुत कन्वेंशनल है। बहुत पुराने समय से जो हमारी, चूंकि पुराने जमाने में उतना वैक्सीन बनाने की टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई थी, तो शुरुआती दौर में जो वैक्सीन बनती थी उसमें होल वायरस यूज किया जाता था, जिसे किल्ड कर दिया जाता था। तो किल्ड करके इनएक्टिवेट करके यूज किया जाता था। तो ये पुरानी मेथोडोलॉजी के रूप में यूज हुआ। सो इसकी भी सेफ्टी मेजर्स अच्छे हैं और यहाँ से आप नीचे से फैक्ट शीट को आप डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो ये आपकी कोवैक्सीन की फैक्ट शीट है। इसके भी कोई भी मेजर ज्यादा साइड इफेक्ट्स नहीं, तो इस वैक्सीन को भी आप यूज कर सकते हैं। तीसरी वैक्सीन जिसकी अभी चर्चा तो है, लेकिन वैक्सीन उस मात्रा में उस जगह, मतलब सभी जगह उतनी मात्रा में नहीं है, स्पुतनिक वी। स्पुतनिक वी की जानकारी भी आप उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ आप खोलेंगे, आपको वैक्सीन के बारे में, उसकी स्टडीज है, इन सब के बारे में इसमें आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बस इसमें अंतर ये है कि इसमें 2 डोज का इस्तेमाल होता है। ये भी वेक्टर वैक्सीन ही है, यानी जैसी कोविशील्ड बनाई जाती है उसी तरह से वेक्टर के द्वारा इस्तेमाल की गई है। एडिनो वायरस का यूज किया गया है। एडिनो वायरस में स्पाइक्स प्रोटीन का लगाने के लिए इसको जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया है, लेकिन इसमें 2 तरह के जेनेटिकल मॉडिफिकेशन किए गए हैं। तो पहली डोज में कुछ और मॉडिफिकेशन मिलेंगे, दूसरे डोज में कुछ और मॉडिफिकेशन मिलेंगे। तो शायद ये प्रयास किया गया है कि पहले में हम क्या करें कि स्पाइक प्रोटीन का मॉडिफिकेशन करेंगे, तो जो भी एंटीबॉडीज बनेंगे वो स्पाइक प्रोटीन को रिकॉग्नाइज करने के लिए बनेंगे, और सेकंड डोज में बूस्टर के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है या कुछ और दूसरे सरफेस प्रोटीन का इस्तेमाल किया जा सकता है जिसके खिलाफ एंटीबॉडीज को डेवलप किया जा सकता है। तीसरा जो रिलायबल सोर्स है वो है WHO। जैसे कि आप देखेंगे कि स्पुतनिक में जो है, स्पुतनिक में बहुत ही ज्यादा उन्होंने अपने जो क्लिनिकल ट्रायल्स को एक्सपोज नहीं किया है, हिडन करके रखा है। हालांकि काफी जानकारी उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे दी गई है, लेकिन वो ग्लोबली क्या है, WHO को अपने डेटा शेयर करने में उतना बिलीव नहीं करते, तो आपको WHO में उसका डेटा नहीं मिलेगा। लेकिन आप यहाँ देखेंगे कि कोविशील्ड ने पूरे नियम के तहत WHO को अपनी सारी जानकारी शेयर की हुई है
कोवैक्सीन ने अप्लाई किया हुआ है। बहुत जल्दी WHO की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको कोवैक्सीन के बारे में भी जानकारी मिल जाएगी। तो जब आप इसको खोलेंगे तो हर WHO ने क्या किया हुआ है कि हर वैक्सीन के लिए अपनी रिकमेंडेशन दी। तो आप देखेंगे स्क्रीन पर WHO रिकमेंडेशन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, सीरम इंस्टीट्यूट की जो कोविशील्ड है उसके लिए WHO का क्या रिकमेंडेशन है। नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो सारी जानकारी आपको इसमें मिलेगी और नीचे की तरफ WHO का रिकमेंडेशन आपको मिलेगा। तो ये WHO का रिकमेंडेशन है फॉर द इमरजेंसी यूज ऑफ कोविशील्ड। कोविशील्ड की इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए बड़ी लंबी लिस्ट है, 125 पेजेस की, और इसको भी आप पढ़ के और पूरी जानकारी यहाँ से ले सकते हैं। तो कई बार शक होता है कि भाई ऐसा तो नहीं कि कोविशील्ड ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर केवल वो चीजें लिखी हो जो उसकी पॉजिटिवनेस को दिखाती हो। तो आप वैक्सीन WHO की वेबसाइट देख सकते हैं। WHO एक रिलायबल सोर्स है और वो जो भी उसके उसको बनाने वाले हैं, ऑनर है, जो भी उसके मैन्युफैक्चरर है, उससे हटकर सटीक जानकारी देता है। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी केयरफुल्ली। अब मैं हल्की सी छोटी छोटी बातें और आपको बता देता हूँ जिस प्रेजेंटेशन में थी नहीं। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि टीका लगवाना चाहिए कि नहीं लगवाना चाहिए। तो अगर आप WHO की गाइडलाइन देखेंगे, रिकमेंडेशन देखेंगे, तो कुछ कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिनको देख के आदमी घबरा जाएगा कि भाई हमें नहीं लगाना। जैसे मैं एक टर्म आपको बताना चाहूँगा कि उसमें लिखा है कि VAED के बारे में कोई भी रिसर्च जो है वो किसी भी वैक्सीन में अभी तक जमा नहीं। सो VAED होता है वस्कुलर एनहांस्ड एसेसरीज डिसीज। यानी कई बार होता क्या है कि अगर कोविड-19 का जो वैक्सीन बना है उसमें जो वायरल लोड है वह एक्सीडेंटली कुछ ज़्यादा हो जाता है और उसके बाद आपको बाहर से वायरस का अटैक होगा तो अंदर भी पर्याप्त मात्रा में वायरस मौजूद है, भले वो एटीन्यूटेड है। बाहर से कोरोना का आपको इन्फेक्शन होता है तो एक अप्रिशिएबल अमाउंट जो है कोरोना वायरस का आपके शरीर में हो जाएगा, तो आपकी जो डिसीज हो रही है बल्कि एनहांस हो जाएगी और इससे इट में भी रिजल्ट टू द डेथ ऑल्सो। तो इस तरह की उसमें दी हुई है, लेकिन साथ में प्रिकॉशनरी वे भी दिया हुआ है तो हमको क्या करना है। अभी होता क्या है कि लोग अपना वैक्सीन लगाने के बाद मास्क पहनना बंद कर देते हैं, फिर से उसी लाइफस्टाइल में वो जीने लगते हैं। और ये रिपोर्टेड है WHO में और इनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स में कि इट में टेक टाइम टू डेवलप एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज को डेवलप करने में वैक्सीन को समय लग सकता है। इसके अलावा बॉडी की जो पर्सन की खुद की बॉडी है, सो इस पर भी डिपेंड करता है कि कितना समय लगेगा एंटीबॉडीज बनने में, या अप्रिशिएबल अमाउंट बनेगी या कम बनेगी। तो एंटीबॉडीज के टेस्ट लगाए जा सकते हैं, लेकिन वैक्सीन तो हमें लगानी होगी क्योंकि वैक्सीन एकमात्र ऐसा उपाय है जो इस कोरोना वायरस को यहाँ से खत्म कर सकता है। तो एक आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप वैक्सीन को लगाएं तो उसके बाद ही प्रिकॉशन आप जारी रखें। क्यों रखें? हो सकता है वायरल लोड थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, हो सकता आपका बॉडी टाइप इस तरह का हो कि एंटीबॉडीज कम बनी हो, या हो सकता ना बनी हो। इसमें घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं। अगर आपकी एंटीबॉडीज नहीं बनी है आप किसी दूसरी वैक्सीन का डोज भी ले सकते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कम बनी है थोड़ा इंतजार कीजिए, बनना प्रारंभ हो जाएगी, लेकिन तब तक आपको कोरोना वायरस के जितने प्रोटोकॉल्स हैं उनका इस्तेमाल करना ही करना होगा। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप ये समझते हैं कि जब कोई वैक्सीन बनती है तो केवल उस वैक्सीन के अंदर मात्र वो वैक्सीन भर नहीं होती, केवल उसमें एटीन्यूटेड वायरस या एडिनो वायरस नहीं होते, उसमें कई और इंग्रेडिएंट्स भी होते हैं जिनके बारे में लोगों को इतनी जानकारी नहीं। तो हम ये देखते हैं कि जब वैक्सीन बनती है तो उसमें क्या क्या प्रोबेबल इंग्रेडिएंट्स उसके अंदर हो सकते हैं। तो सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट है वो है एक्टिव इंग्रेडिएंट, यानी जो ऐसा एक इंग्रेडिएंट जो कि थेरेपेटिक वैल्यू रखता है या कॉज करेगा। सो ऑब्वियसली जो भी आप उसमें वायरल लोड डाल रहे हैं, एटीन्यूटेड का डाल रहे हैं, किल्ड का डाल रहे हैं, या उसमें RNA वैक्सीन यूज कर रहे हैं, DNA वैक्सीन यूज कर रहे हैं, या सब यूनिट वैक्सीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जो भी एंटीबॉडीज को बनाने वाला जो इंग्रेडिएंट है दैट इज कॉल्ड एज एक्टिव इंग्रेडिएंट। एक्टिव इंग्रेडिएंट के बाद उसमें समटाइम्स वी यूज प्रिजर्वेटिव्स। प्रिजर्वेटिव तब यूज करते हैं जब एक ही वायल से आप मल्टीपल डोज यूज करते हैं। होता क्या है कि कई पहले भी वैक्सीन ऐसी बनी है
जिसमें आप एक ही वायल से बार बार डोज निकाल के और आप अपने सब्जेक्ट को देते हैं, तो इसमें होता क्या है कि कंटामिनेशन का खतरा होता है, तो उसमें प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं। हमारे लिए लकी बात ये है कि चूंकि ये सभी सिंगल डोज है, इसमें प्रिजर्वेटिव्स नहीं डाले जाते, ना ही कोवैक्सीन में और ना ही कोविशील्ड में। दूसरा चीज है CBCS कि अपन इसमें क्या है कि फॉस्फेट बफर सैलाइन सॉल्यूशन हम रखते हैं, हम इसका pH मेंटेन रखते हैं, क्योंकि अगर आपको उस वायरल लोड की स्टेबिलिटी को बढ़ाना है तो आपको इसका जो pH वैल्यू है वो मेंटेन रखना पड़ता है। तो pH वैल्यू को मेंटेन रखने के लिए इसमें कई तरह के सॉल्ट्स भी डाले जाते हैं, बफर सॉल्यूशन इसमें मिलाया जाता है। तो दूसरा इंग्रेडिएंट हो गया। तीसरा इंग्रेडिएंट है कि इसमें शुगर की तरह कुछ चीजें यूज की जाती हैं, सुक्रोज यूज किया जाता है या उसके अल्टरनेटिव जो दूसरे पॉलीसैकेराइड्स हैं वो यूज किए जाते हैं। ये इसलिए यूज किए जाते हैं कि आप सोचिए कि इसको आप कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं, तो इतने कम तापमान में जब आप इसको रखते हैं तो ये कभी कभी फ्रीज भी होते हैं वैक्सीन, और जब फ्रीज होते हैं तो ये हो सकता है कि जो वायरस है उनके आपस में मिलकर क्लम्प बन जाए। तो चूंकि वो वायरस आपस में क्लम्प ना बनाए तो एक आपको क्रायो प्रोटेक्टेंट का इस्तेमाल करना होगा, तो जिसके लिए हम इसमें शुगर या शुगर के अन्य अल्टरनेटिव्स जो है वो यूज करते हैं। और एक और चीज होती है, उसको बोलते हैं रेजिड्यू। भाई जब आप एडिनो वायरस को ले रहे हैं, एडिनो वायरस को लेने के बाद कोविशील्ड का एग्जांपल बता रहा हूँ, और एडिनो वायरस को आप लेकर आप कई तरह के उसमें मेथोडोलॉजी यूज करके आप उसकी जेनेटिक इंजीनियरिंग करेंगे, तो इसमें कई बीच में छोटे छोटे कई इंपॉर्टेंट केमिकल्स हैं। आप RNA को क्लीवेज करेंगे तो उसमें कोई केमिकल यूज होगा, तो इस तरह के कई केमिकल इस्तेमाल होते हैं। और जब हम फिल्टर करते हैं और प्योर जो है आपके एक्टिव इंग्रेडिएंट को लेने का प्रयास करते हैं, तब भी कई रेजिड्यूज जो है वो वैक्सीन के अंदर बच जाते हैं। तो ये रेजिड्यूज भी इसके अंदर होते हैं। प्रयास किया जाता है कि ये सब परमिशिबल लिमिट में रहे। तो मैंने ये सब इसलिए बताया क्योंकि जब आप वैक्सीन के साथ उसमें और भी इंग्रेडिएंट्स यूज कर रहे हैं तो हो सकता है कि आप उसके एलर्जिक, और एलर्जी हो सकती है आपको बहुत ज्यादा, आप उसके एलर्जी, तो आप वैक्सीन लगवाने तो जा रहे हैं, लेकिन होगा क्या कि वो एलर्जिक रिएक्शंस के रूप में आपको रिप्रेजेंट करे। तो आपका प्रयास ये भी होना चाहिए कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो वैक्सीन है और वैक्सीन से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट उससे मिलाए गए उसके प्रति आप हाईली एलर्जिक ना हो। तो भारत जैसे बड़े देश में 1 to 1% की कंप्लीट एलर्जिक जो है प्रोफाइल बनाना ये तो बहुत कठिन है। तो ये पर्सन खुद ही बता सकता है, क्योंकि कभी उसने एलर्जिक टेस्ट कराएंगे तो बता सकता है जब वैक्सीन लगाने जाए कि भाई मुझे इस इंग्रेडिएंट से जो है वह एलर्जी है, तो उसमें उसको डिले किया सकता है या एंटी एलर्जिक ड्रग्स का इस्तेमाल किया सकता है। और एक बहुत अच्छी बात यह है कि जब भी वैक्सीन लगाते हैं तो ½ एन आवर का एक प्रोटोकॉल होता है जिसमें आपको वहीं बैठना पड़ता है, तो कोई सडन साइड इफेक्ट्स वगैरह आपको नहीं हो रहे हो, इसका पूरी तरह से ध्यान रखना पड़ता है। तो इस तरह से वैक्सीन को लगवाना बहुत जरूरी है। मैं एक और एग्जांपल बताता हूँ कि अगर मान लीजिए कि हमें ये पता है कि जब एक देश दूसरे देश के खिलाफ लड़ता है या बॉर्डर पे लड़ते हैं तो हमें पता है कि सामने से गोलियां चल रही होती है। सामने से गोलियां चलने के बावजूद भी हमारे सैनिक जो है वो बॉर्डर पे जाते हैं, लड़ते हैं। सारे सैनिक नहीं मारे जाते, लेकिन कई कुछ सैनिक हैं जिनमें गोलियां लगती हैं। ये भी एक तरह का युद्ध है। कोविड-19 वायरस से, कोविड का कोरोना वायरस है, इससे हम एक युद्ध लड़ रहे हैं। वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स हमें आप ये पता चला है कि साइड इफेक्ट्स तो बहुत ही कम है, नेग्लिजिबल है। और आपको विश्वास होगा कि इतनी ज्यादा वैक्सीन लगने के बाद मात्र एक डेथ जो है वो इंडिया में रिपोर्ट हुई। सो इट इज क्वाइट सेफ। तो ये मानवता का सवाल है, ये देश को बचाने का सवाल है। तो एक ये देशभक्ति भी आप इसको मान सकते हैं कि कोरोना की वैक्सीन लगवाना देशभक्ति से कम नहीं। हम सब मिलकर ही इसको जीत सकते हैं और हमें इस पर पूरा प्रयास करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना प्रेशियस इंफॉर्मेशन शेयर किया है हमारे साथ। आपने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस जो जनरल आते हैं उनके आंसर्स तो कर ही दिए सर, बट कुछ क्वेश्चंस हमारे पास भी आए हैं। जैसे कि सर हमारे पास अभी अवेलेबल कोवैक्सीन, कोविशील्ड और फाइजर की वैक्सीन है, तो उसमें से सबसे ज्यादा एफिकेसी कौन सी वैक्सीन की है सर? मतलब डेटा तो सर हमारे पास अवेलेबल। सर प्लीज अनम्यूट कर लेंगे सर। देखिए, पहली चीज तो क्या है कि भारत में आपदा प्रबंधन कानून लागू है, तो कुछ भी कहना तो उचित नहीं होगा और वो व्यक्तिगत राय
हो जाएगी। आपने देखा होगा मैंने अपने प्रेजेंटेशन में एक सिंगल लाइन अपनी इस्तेमाल नहीं की। यस सर। जी, उसका यही एक कारण है। तो एफिकेसी का जहां तक सवाल है मैडम, एफिकेसी ऑलमोस्ट सभी की बहुत अच्छी है, और अगर आप रिपोर्टेड केस देखेंगे तो स्पुतनिक वी की एफिकेसी ज्यादा बताई गई। यस सर। उसके बाद आपकी कोवैक्सीन भी काफी अच्छी एफिकेसी है, कोविशील्ड तो है ही, लेकिन जो मेरी व्यक्तिगत राय है तो कोविशील्ड और कोवैक्सीन में व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि कोवैक्सीन जो है वह ज्यादा इफेक्टिव होगी, क्योंकि जब आप मैं ये केवल मेरी व्यक्तिगत राय, जब आप कोवैक्सीन यूज करते हैं तो आप चूंकि होल वायरस यूज कर रहे हैं, तो जहां स्पाइक प्रोटीन से आप इंट्रोड्यूस कराते हैं बॉडी को, वहीं आप एम प्रोटीन और ई प्रोटीन को भी इंट्रोड्यूस कराते हैं, तो मल्टीपल उसको साइट्स मिलती हैं एंटीबॉडीज को डेवलप होने के लिए। और अभी ये भी पाया गया है कि जो नए वेरिएंट्स आ रहे हैं उसमें कोवैक्सीन ज्यादा इफेक्टिव है। सो जहां तक मेरा मानना है, आई थिंक कोवैक्सीन इज बेटर देन कोविशील्ड, लेकिन ऐसा कहा नहीं जा सकता, ऑल आर इक्वल। ओके सर। सर एक और क्वेश्चन है कि मतलब हमारे लिए कोविड-19 से बचने के लिए क्या बेटर प्रिकॉशन हो सकती है, वैक्सीनेशन या फिर सेल्फ क्वारंटीन? दोनों ही ऑप्शन मैडम मेरे ख्याल से अच्छे हैं, लेकिन वैक्सीनेशन कराने के बाद आप फुर्सत हो जाएंगे। एक बार आपको वैक्सीन लग गई, उसके बाद आपको 1.5-2 महीने का प्रिकॉशन रखना है। अपने आप को ये मान के चलना है कि भाई 1-1.5 महीने में हमारे अंदर एंटीबॉडीज बन जाएंगी। और बिल्कुल मत भूलिए, ये गलती कर रहे हैं लोग, अपना एंटीबॉडीज टेस्ट कराइए, देखिए शरीर में एंटीबॉडीज बने हैं कि नहीं बने। जब आपको वहां पर देखेंगे, आप उसकी मात्रा देखेंगे, ये सभी लैबों में हो जाता है, और जब आप देख लेंगे कि हाँ भाई पर्याप्त मात्रा में एंटीबॉडीज बन रहे हैं, तब आप अश्योर हो सकते हैं। मात्र वैक्सीन लगाने से आप अश्योर नहीं हो सकते कि भाई किस मात्रा में एंटीबॉडीज बने हैं। तो एंटीबॉडीज टेस्ट करा सकते हैं, उसके बाद 1.5-2 महीने के बाद तो क्वारंटाइन तो ये होगा कि 14 दिन में बच गए, फिर बाहर निकलेंगे। तो वैक्सीन इज अ परमानेंट सोल्यूशन आई थिंक। और मैं एक छोटी बात और यहाँ पे इंटरप्ट कर रहा हूँ कि माइक्रो वैक्सीन लगवाइए, अपने बच्चों को, खुद को माइक्रो वैक्सीन लगवाइए। अब आप बोलेंगे माइक्रो वैक्सीन क्या है, तो पुराने जमाने में आपको याद होगा, हम अपने छोटे मोटे घरों में रहते थे, गाँव में भी आप आज जाएंगे, किसी भी तरह की कोई टाइल्स नहीं लगी होती थी, बच्चे बाहर घूमते थे, कोई इतनी ज्यादा हाइजीनिक तरीका हम नहीं रखते थे। तो होता क्या था कि छोटे मोटे बैक्टीरिया वायरस हमें अटैक करते रहते थे छोटी मात्रा में, और हमारे अंदर खुद ही सेल्फ नेचुरल इम्यूनिटी डेवलप होती रहती थी। अब होता क्या साहब, जैसे मेरे घर में भी है, टाइल्स लगी हुई है, और रोज हम उसको फ्लोर क्लीनर से साफ कर देते, तो बच्चे बेचारे वो बैक्टीरिया वायरस छोटे मोटे उनसे एक्सपोज ही नहीं होते। दूसरा क्या होता है, हल्का बीमार पड़ते हैं, हर आदमी बिजी है, तो करता क्या है कि वो जाके तुरंत डॉक्टर के पास जाता है, भाई इसको अच्छी तुम एंटीबायोटिक दो, सही हो जाए, तुरंत एंटीबायोटिक दिया। उसको टाइम नहीं देते हैं, बच्चे की बॉडी को वो हमला कर रहा है बैक्टीरिया, तो बॉडी को समझने तो दो, बॉडी को कुछ डेवलप तो करने दो, लेकिन हम उतना टाइम ही नहीं देते। एंटीबॉडीज कहाँ से बनेंगी? ये माइक्रो वैक्सीन है, नेचुरल माइक्रो वैक्सीन। आप एक्सपोज कीजिए, उनको गाँव भेजिए, उनको गोबर में घूमने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। उनको छोटी मोटी, आप लोग तो शायद जानते होंगे कि आपके जमाने में छोटी मोटी फोड़ा फुंसी होती रहती थी बच्चों को, आज होती ही नहीं मेरे बच्चे, कोई एक्सपोजर ही नहीं। यस सर। होने दीजिए, वो शरीर के लिए अच्छा है, दैट इज माइक्रो वैक्सीन। ओके सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोविड वैक्सीन की सर जो इम्यूनिटी डेवलप होती है सर, वो कितने समय तक रहती है, मतलब वो इम्यूनिटी कितनी टाइम तक प्रोलॉन्ग रह सकती है हमारी बॉडी में? जी मैडम, अब मैडम क्या होता है कि किस तरह का वायरस अटैक कर रहा है उस पर डिपेंड करता है कि वो कितने समय तक रहेगा। जैसे आप देखेंगे कि पोलियो का टीका जो है, जो ड्रॉप अपन देते हैं, वो हर साल आपको मिलेगा कि भाई वो जाके 2 बूंद जिंदगी की करके बच्चों को पिलाया जाता है, क्योंकि उसका बूस्टर जरूरी है। BCG वगैरह कुछ ऐसे टीके हैं जो एक बार लग गए तो लगते हैं, तो डिपेंड्स अपॉन द वायरस। लेकिन मुझे लगता है कि चूंकि ये बहुत फास्टली रेप्लिकेट कर रहा है वायरस, म्यूटेशन बहुत इसमें अधिक है, तो हो सकता है कि वैक्सीन भी आगे, उनके वैक्सीन का टाइप भी थोड़ा बदला जाएगा, और शायद से बूस्टर की आवश्यकता मुझे लगता है कि पड़ेगी। लेकिन आप दोनों तरफ देखिए ना, क्या है, हमें ये देखना पड़ता है कि हमारा एडेड एडवांटेज किस तरफ है। अगर एक ऐसा खतरनाक वायरस है जो जब अटैक करता है, पूरे परिवार की सोचिए डेथ हो जाती है, लोग ऑक्सीजन के लिए मारा मारी से परेशान हो रहे, तो साल भर अगर एक इंजेक्शन आपको लग रहा है, तो मेरे ख्याल से वो भी बहुत अच्छा लगने दीजिए। 1 साल तक की वैलिडिटी रहती, कोई प्रॉब्लम नहीं, अगले साल फिर लगा लेंगे। कम से कम आदमी बाहर जाकर अपनी इकोनॉमी, अपने देश के ग्रोथ के लिए सोच सकता है, ये चीजें कर सकता है। यस सर। एक और क्वेश्चन,
वैक्सीन की 2 डोजेस क्यों जरूरी है सर? आई मीन हमें जो वैक्सीन दी जाती है यूजुअली हम देखते हैं कि 2 डोजेस में हमें प्रोवाइड की जाती है, तो सर 2 डोजेस क्यों जरूरी है वैक्सीनेशन के लिए? ये एक मिनी बूस्टर है मैडम। एक्चुअली होता क्या है कि वायरस जितना खतरनाक ये है कि हम ये अश्योर करना चाहते हैं कि परफेक्ट मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन जो है, एंटीबॉडीज जो है वैक्सीन के थ्रू बन जाए। तो हम क्या करते हैं, पहले पहला डोज देते हैं। पहला डोज करने के बाद हम एक लंबा पीरियड असेस करते हैं कि कितने लंबे समय तक वो एंटीबॉडीज पर्याप्त मात्रा में बन जाएंगी। पर्याप्त मात्रा में बनने के बाद फिर हम एक दूसरा डोज भी लगा देते हैं। तो एक अश्योरिटी है, एक मिनी बूस्टर, मतलब उसको और प्रभावी करने के लिए 2 डोज। एक डोज में भी एंटीबॉडीज बन जाती हैं, लेकिन 2 डोज लगाएंगे तो एक मिनी बूस्टर आपको सब्सिक्वेंट पीरियड में मिल जाएगा, ज्यादा एफिकेसी इसमें मिल जाती है। ओके सर, थैंक यू सर। और सर एक लास्ट क्वेश्चन, एक स्टूडेंट के क्वेश्चन है कि मतलब कोविड-19 के लिए बेस्ट ट्रीटमेंट क्या हो सकती है, हम क्या बोल सकते हैं? वैसे तो वैक्सीन ही है, बट उनका पूछना है कि बेस्ट ट्रीटमेंट। जी जी, मैं थोड़ा समय लेके बस स्टेरॉइड की चर्चा करूंगा तो ये समझ में आ जाएगा कि कौन सी दवा ठीक है, कौन सी ठीक नहीं। स्टेरॉइड के मामले में चूंकि हम फार्मेसी के हैं तो हम जानते हैं कि दवाइयाँ कितनी लाइफ सेविंग होती है। एलोपैथिक दवाइयों को आप इतनी तरह से दरकिनार नहीं कर सकते, और काफी चर्चा चली कि देखो साहब स्टेरॉइड लिया है और डेथ हो गई, तो क्या स्टेरॉइड जरूरी नहीं था क्या? तो डॉक्टर क्या फालतू में लगाता था? स्टेरॉइड का क्या इंपॉर्टेंस? तो उसके बारे में हल्का सा मैं आपको चर्चा करूंगा कि जब कोरोना वायरस आप पे हमला करता है तो शरीर कैसे पता करेगा कि साहब कोरोना वायरस ने लंग्स पे हमला किया। तो जब कोरोना वायरस आपके लंग्स पे हमला करता है तो आप जैसे जानते हैं थाइमस से और बोन मैरो से आपके जितना भी आपके टी सेल्स हैं और बी सेल्स हैं वहां से रिलीज होती है, और इसी तरह से जितनी हेल्पर सेल्स हैं, इन सेल्स को लड़ने के लिए साइट ऑफ एक्शन तक जाना पड़ेगा, यानी इनको आपके लंग्स तक जाना पड़ेगा और ये पता उनको होना चाहिए कि भाई कोरोना वायरस वहां पर है। तो होता क्या है कि जब कुछ सेल्स वहां पहुंचती हैं और उनको पता चलता है कि यार साहब कोरोना वायरस का हमला हुआ है, तो वो कुछ केमिकल रिलीज करती हैं। आप लोग चूंकि फार्मेसी के जानते हैं, इंटरल्यूकिन 6 और 7 जो मेजर है वो केमिकल वो रिलीज कर देती है। एक सिग्नल होते हैं कि भाई अच्छा खासा हमला हुआ है और हमें और लड़ने के लिए और सेल्स की जरूरत है। IL-6 IL-7 के जो केमिकल्स हैं वहां से मूव करके आपके थाइमस और बोन मैरो के पास पहुंचते हैं। इनको पता चला हमला हुआ है और ये जगह ही बताते हैं कि भाई लंग्स पे हमला हुआ है। यहाँ से काफी मात्रा में एंटीबॉडीज तो नहीं बोल सकते हैं, जो भी फाइटर सेल्स हैं वो यहाँ से तेजी से निकलती हैं लंग्स के पास पहुंचकर और उनको कोरोना वायरस को नष्ट करना चालू कर देती है। अगर इसके बावजूद भी अगर ज्यादा लोड है तो IL-6 IL-7 और अधिक मात्रा में निकलेगी। तो आप ये समझ सकते हैं कि जितना इन केमिकल मैसेंजर्स का वहां से रिलीज होगा उतना ही ज्यादा वहां से फाइटर सेल्स लंग्स की तरफ पहुंचेगी। अब ये मान लीजिए कि साहब लंग्स में कोरोना वायरस कम है लेकिन IL-6 और IL-7 ज्यादा रिलीज होंगे, तो ये ज्यादा रिलीज होंगी तो फाइटर सेल्स बहुत ज्यादा वहां से रिलीज होकर लंग्स की तरफ बढ़ेंगी। अब ये सोचिए कि कोरोना वायरस है कम और फाइटर सेल्स आ गई बहुत ज्यादा, तो होता क्या है, जैसे आप एक इमेजिन कीजिए लड़ाई हो रही है, आप बहुत तेजी से तलवार चला रहे हैं, आपके अगल बगल आपके ही सन है, तो हो सकता है कि एक तो तलवार आपको ही लग जाए। ऐसा ही वहां होता है, जब ये फाइटर सेल जाती हैं तो इतनी तेजी से लड़ती है कि कोरोना के साथ साथ ये अपनी लंग सेल्स पे भी अटैक करना। हेलो हेलो हेलो, आ रही है आवाज, आ रही है। हाँ सर, आवाज आ रही है। हाँ जी। तो ये क्या करती है फाइटर सेल्स के सर, लंग सेल में भी हमला करना चालू कर देती है, जिसको हम टेक्निकल भाषा में ऑटो इम्यून डिसीज कहते हैं। मतलब अपनी ही सेल्स में हमला चालू करती है क्योंकि बहुत ही ज्यादा सिग्नल्स वहां पर पहुंचे थे। तो उससे क्या होगा कि वहां पे एडिमा की स्थिति बनती है, सूजन होने लगती है, स्वेलिंग इन्फ्लेमेशन आ जाता है और थोड़ा थोड़ा वहां पर फ्लूइड भी सीक्रेट होता है, जिससे क्या होता है ब्लॉकेज लंग्स में होने लगता है और SpO2 और ऑक्सीजन आपकी कम होती है। अब साहब अगर नेचुरली ये चलता रहा, IL-6 IL-7 ज्यादा निकलती रही, फाइटर सेल्स बहुत ज्यादा बढ़ती रही, वो जाकर ऐसे ही करती रही, तो धीरे धीरे आपके लंग्स ब्लॉक होता जाएगा। आपकी ऑक्सीजन पता चला साहब 90 थी, फिर 80 हो गई, फिर 70 हो गई, ऐसे करते करते साहब एक या दूसरे दिन में पेशेंट की डेथ हो गई। तो हमें क्या करना होगा? हमें IL-6 और IL-7 को रोकना। जो स्टेरॉइडल हार्मोन मिथाइल प्रेडनिसोलोन वगैरह दिए जाते हैं, इनका केवल इतना ही काम, जब हम इनको बॉडी के अंदर लगाएंगे तो ये क्या करते हैं, IL-6 और IL-7 को लिमिटेड तरीके से रोकते हैं, सप्रेस करते हैं। इतना करते हैं कि भाई कोशिश हो कि ऑटो इम्यून डिसीज ना हो, तो धीरे धीरे एडिमा कम होगा, इन्फ्लेमेशन कम होगा और धीरे धीरे आपकी SpO2 ऑक्सीजन जो है वो
नॉर्मल स्थिति में आने लगेगी। इसी दौरान आप दूसरी जो भी ड्रग्स है उनका इस्तेमाल कर कर आप उसे बचा सकते हैं। तो एक्चुअली आपका जो स्टेरॉइड ड्रग्स है दे आर लाइफ सेविंग, अगर नहीं करेंगे तो डेथ तो बहुत जल्दी हो जाएगी। हाँ, ये ध्यान रखना है कि प्रॉपर डोज में दी जाए, इतना दिया जाए कि IL-7 और IL-6 के जो केमिकल कीमोकाइंस हैं वो इतने रिलीज हो कि जो डिसीज को तो डिसीज वाले कोरोना वायरस में तो अटैक करे लेकिन सेल पे ना करें। तो कहीं ना कहीं डोज ऊपर नीचे हो ही जाती है। तो ऐसा नहीं है, स्टेरॉइड बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी। और जो जी आपने जो बाकी दवाइयों का बोला है, तो अभी कोई शर्तिया इसकी मेडिसिन तो है नहीं, ऑल आर इन क्लिनिकल ट्रायल बेसिस। ओके सर। सर क्वेश्चंस तो और भी काफी सारे आ रहे हैं। यस सर, सर आप बोलिए। एक्सक्यूज मी सर, एक हम भी जानना चाह रहे हैं, वो न्यू म्यूटेंट वेरिएंट्स के बारे में हम कुछ जानना चाहते हैं कि ये न्यू म्यूटेंट वेरिएंट्स तो आते हैं और आते ही रहेंगे, ये तो कॉमन फीचर्स है वायरस का। और कुछ केस में हम लोग इन्फ्लुएंजा केस में अलग अलग साल में अलग अलग वायरस म्यूटेंट का बनाते भी। तो माय क्वेश्चन ही, अब हम ये जानना चाहते हैं कि क्या इसकी कुछ असेसमेंट प्रक्रिया शुरू हुई है कि नए म्यूटेंट पर हमारे ये वैक्सीन कितने कारगर है। नंबर 1, ऐसी कोई प्रक्रिया शुरू की गई है या उसका कुछ रिजल्ट सामने में आए हैं कि नए म्यूटेंट पर हमारे ये कितने कारगर हो पा रहे हैं जो हमारे अभी वैक्सीन है। नंबर 2, क्या इस पर भी सोचा जा रहा है कि नए म्यूटेंट्स के लिए अलग अलग वैक्सीन बनाए जाए, जैसा कुछ इन्फ्लुएंजा में होता है, अलग अलग म्यूटेंट के लिए अलग अलग वायरस ये बनाते हैं वैक्सीन, और जिस एरिया में जो ज्यादा होता है वो उसको देते हैं। तो क्या इस तरह की कोई प्रक्रिया, कुछ सोच ये शुरू हुई है, ये जानकारी लेना चाहते हैं। यस सर, इस बारे में भी काफी भ्रांतियां हैं कि ये ह्यूमन मेड वायरस है कि नेचुरली ये वायरस डेवलप हुआ है। तो अलग अलग थ्योरी है। अगर ह्यूमन मेड की बात की जाए तो शी जिंगली साइंटिस्ट थी चाइना में, वुहान में, उन पे ज्यादा शक किया जाता है कि उन्होंने जो है इस वायरस को बनाया था। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि ये वायरस जो है ये अपने पुराने वायरस में से किसी वायरस में से उतना मैच नहीं करता, यानी अचानक से इस पे स्पाइक प्रोटीन बनना। तो पुराने आप मर्स वायरस वगैरह देखेंगे उस तरह का इसमें फीचर्स ही नहीं। इसके ज्यादातर जो फीचर्स हैं वो HIV वायरस से मैच करते हैं। तो ऐसा पाया गया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि HIV और इसके प्रॉपर मिक्स से एक नया वायरस बनाया गया। दूसरा जो है कि वायरस म्यूटेशन क्यों कर रहा है, तो चूंकि जीने का सभी को अधिकार है और वायरस कहीं ना कहीं क्या है सर कि उसको एक्सपोजर का मौका मिल रहा है, इसलिए वो म्यूटेशन कर रहा है। हमें एक्सपोजर रोकना होगा। जितनी कम ह्यूमन बॉडी इसको मिलेगी, जितना कम हॉस्ट सेल इसको मिलेगा, उतना इसको मौका कम मिलेगा कि ये म्यूटेशन को कर पाए। इसके अलावा जब हम मेडिसिन को भी यूज करते हैं सर, तो मेडिसिन जब यूज करते हैं तो एक लर्निंग पीरियड में है, हमारी बॉडी भी लर्निंग पीरियड में है, वायरस की बॉडी भी लर्निंग पीरियड में। जब वो स्टेरॉइड देखता है, जिथ्रोमाइसिन देखता है, एमोक्सिलिन है, अभी आप सारी दवाइयां इसमें यूज करते हैं, तो वो जब एक के बाद दूसरी पीढ़ी वायरस की बनती जाती है तो वो लर्न भी करती है कि यार इस चीज से काफी डिसीज होती है, इससे मुझे बचना है, तो वो म्यूटेशन कर लेती। मे बी पॉसिबल, मैं 100% गारंटी नहीं देता हूँ, लेकिन वायरस को अभी वैक्सीन एक्सपोजर ही बहुत मिल रहा है। मे बी ये पॉसिबल है कि भाई चलो आपने एक ऐसा वैक्सीन बनाया है तो वो वायरस ये प्रयास करे कि भाई मैं इस तरह से म्यूटेशन करूं कि ये वाली चीज मुझ पे इफेक्टिव ना हो। तो ये तो डाउटफुल है। और दूसरा जो इतनी ज्यादा वेरिएंट आ रहे हैं उन पे किस तरह की स्टडी हो रही है, ये अभी किसी ने पब्लिसाइज नहीं किया है किसी भी तरह की वेबसाइट में। काफी क्या है, गवर्नमेंट जो है इसको बाद में रिलीज करेगी, तो इसके बारे में कुछ भी कहना मेरी तरफ से तो उचित नहीं। थैंक यू। सर एक और क्वेश्चन है। हमने रिसेंटली सर सेकेंड वेव में बहुत देखा था ये ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, फिर नई वेरिएंट आई और येलो फंगस। तो इन सर तीनों टाइप के फंगल इन्फेक्शंस की कोविड से क्या रिलेशन है सर? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, अच्छा प्रश्न मैडम, और मैंने काफी आंसर इसका दे दिया था। मान लो मुझे कोरोना वायरस हुआ, कोरोना वायरस होने के बाद एक तो कोरोना वायरस वैसे ही इम्यूनिटी को डाउन करता है। अब आप बोलेंगे कोरोना वायरस ने इम्यूनिटी क्यों डाउन किया, तो इसके पुराने जितने भी मर्स वायरस या SARS-CoV-1-2 थे उनमें इम्यूनिटी को डाउन करने के इतने फीचर्स नहीं थे, लेकिन वो फीचर्स अचानक से आप कोरोना वायरस SARS-CoV-2 में ये फीचर्स पाए गए। लेकिन इस तरह के फीचर्स, इम्यूनिटी डाउन करने के फीचर्स जो है वो HIV वायरस में होते हैं। तो कहीं ना कहीं HIV वायरस से शायद ये प्रॉपर्टीज में आ गई हो
या जेनेटिकली आर्टिफिशियली बना के इसमें ट्रांसफर की गई, तो ये इम्यूनिटी को भी अटैक करता है लाइक HIV वायरस। तो जब आपको कोरोना वायरस का असर होगा तो आपकी इम्यूनिटी डाउन तो होगी। दूसरा जो मैंने आपको बताया था कि स्टेरॉइड क्यों जरूरी है, क्योंकि जब स्टेरॉइड आप लगाएंगे IL-6 IL-7 कम होंगे, यानी कि आपके अंदर फाइटर सेल को देने वाले सिग्नलों को आपने कम कर दिया है। क्यों कम कर दिया था? ताकि भाई आपकी लिवर सेल को जो डिस्ट्रॉय ना करें, तो वो तो ओवरऑल कम होगा। तो अगर मान लो जो नॉर्मल इन्फेक्शंस भी आपके चार अगल बगल जो घूमते हैं, उनके लिए भी IL-6 और IL-7 उतने डेवलप नहीं हो पाएंगे। आप जब आप कोरोना से ठीक होते हैं तो आप मतलब दो तरह से आपकी इम्यूनिटी कम होगी। पहली तो कोरोना ने ही कर दी इम्यूनिटी डाउन, दूसरा आपने अगर स्टेरॉइडल या इन तरह की चीजें ली हैं तो उन्होंने भी डाउन की। अब क्या होगा, बाहर से इन्फेक्शन हो रहा है, लेकिन ये तो IL-6 और IL-7 को रोक के रखे कि भाई तुम फाइटर सेल को नहीं बताओगे कि क्या हमला हुआ है, तो ये रोक के रखे हैं। तो इसलिए अपनी बॉडी क्या बहुत इम्यूनिटी बहुत डाउन हो चुकी होती है कोरोना वायरस से इन्फेक्शन होने के बाद। तो एक आपको एक खतरा रहेगा कुछ समय तक, तो आपको 2-3 महीने काफी अलर्ट रहना है। और जो ब्लैक फंगस और जो व्हाइट फंगस ये हो रही है, ये हमेशा से अपने एनवायरनमेंट में मौजूद रहेगी, लेकिन सिंस डुअल इम्पैक्ट पड़ता है, मेडिसिन का ही पड़ता है और साथ में कोरोना का इम्पैक्ट पड़ता है, जिसके कारण से इम्यूनिटी बहुत डाउन हो जाती है और ये छोटे छोटे डिसीजेस भी हमें होने लगती है, जबकि ये बहुत नॉमिनल है, होता ही नहीं था। तो बस इसमें करना क्या है कि अगर आपको कोरोना से आप संक्रमित हैं तो आपको कुछ समय के लिए बहुत प्रिकॉशनल रखना है, हर चीज डस्ट वगैरह साफ रहे। 1-2 महीने की बात रखें, इम्यूनिटी को बूस्टिंग करने के लिए जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनको खाएं, और 2-3 महीने अगर आपने आराम से निकाल दिए तो फिर आपका बैक में आ जाएगा और यू कैन अवॉइड द ब्लैक फंगस एक्सेट्रा। और दूसरा क्या है कि जो ICU की कंडीशन है, जो आपकी यूरोपियन कंट्रीज में देखेंगे, अपने यहाँ देखेंगे, टोटली डिफरेंट है। आप जो भी यहाँ पर ऑक्सीजन का लगाते हैं मास्क वगैरह, या जो भी ऑक्सीजन की सप्लाई उतनी हाइजीनिक नहीं होती है। तो वहाँ भी हॉस्पिटल में भी अगर कोविड पेशेंट है तो आपको बहुत हाइजीनिक कंडीशन रखनी पड़ेगी, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी डाउन हो रही है, डाउन होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि हम उसको स्टेरॉइड दे रहे हैं, हमें कोरोना से उसको बचाना है, ये सब तो होगा, लेकिन चूंकि हमें पता है कि भाई इम्यूनिटी डाउन हो रही है, तो बहुत हाइजीनिक रखना है कि भाई किसी तरह का और इन्फेक्शन ना हो जाए। 1.5-2 महीने के लिए अवॉइड करें, इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी, आपको फिर ब्लैक फंगस नहीं। सर एक मिनट सर, एक क्वेश्चन हमारे तरफ से सर। सर बोला जाता है कि आफ्टर कोविड आफ्टर 3 मंथ लेना है वैक्सीन, ऐसा है क्या सर? मतलब आफ्टर कोविड आप जब रिकवर कर जाते हैं तो उसके बाद 3 मंथ के बाद तब आप ले सकते हैं वैक्सीन, ऐसा है क्या सर? इसमें सर ऐसा माना जाता है। हेलो, आई एम ऑडिबल? यस सर, यस सर, यस सर। होता क्या है सर कि जब आप उसको लगाते हैं, कोरोना आपको संक्रमण होता है, तो एक छोटे मोटे एंटीबॉडीज अपने शरीर में बन जाते हैं, और उसके बाद आप अलग से उसमें वैक्सीन लगाने जा रहे हैं, तो वो आपका बूस्टर का काम नहीं करेगा। मतलब एक बूस्टर का काम करेगा आपका फर्स्ट डोज, जो प्राइम जो एंटीबॉडीज को जनरेट करने वाला था वो नहीं करेगा। तो प्रयास ये रहता है कि जो एंटीबॉडी छोटे मोटे थोड़ी बहुत कोरोना वायरस के होने के कारण आपके शरीर में पैदा हुए थे, वो एक मिनिमम लेवल तक पहुंच जाए, देन उसके बाद आप उसकी डोज को लगवाएं, और ये ठीक भी है। दूसरा एक रीजन जो है वो ये है कि हमारे देश की जनसंख्या 135 करोड़ से ज्यादा है, बहुत लोड है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बहुत कम है, तो उतना हम वैक्सीन मार्केट में प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। तो हम ये सोच रहे हैं कि भाई ये भीड़ कम हो, तो हम देखते हैं कि जो नेसेसरी है उसको लगाया जाए। हमने ये पाया कि भाई अगर किसी को कोरोना हो गया है तो उसको एंटीबॉडी कुछ समय तक तो बनी ही रहनी है, तो वो लिटिल बिट सेफ है कुछ समय तक। तो अगर वो वाला पॉपुलेशन हम कम करते हैं तो हम उन लोगों को लगा सकते हैं जिनको बिल्कुल ना हो, जो डायरेक्ट उस खतरे में है। तो एक तरह से एक पॉलिसी ये भी हो सकती है कि सभी लोग सुरक्षित रहें, और जिसको कोरोना हो चुका है वो कुछ समय तक अवॉइड कर सकता है, सेफ है, क्योंकि उसके बॉडी में थोड़ी बहुत एंटीबॉडीज, तो इस हिसाब से ये ठीक है। दूसरा है कि इसका गैप जो है वो बढ़ाया गया है, तो गैप भी प्रोबेबली इसीलिए बढ़ाया गया, साइंटिफिकली देखा गया कि भाई अगर हम गैप बढ़ाएंगे तो चल जाएगा कि नहीं चलेगा, ताकि फर्स्ट डोज कई लोगों को लग जाए। तो जब इसका क्लिनिकल ट्रायल्स किया गया तो ये पाया गया कि हाँ भाई गैप को और थोड़ा बढ़ाया भी जा सकता है, और ये अच्छा भी है, इससे थोड़ी एफिकेसी और बढ़ रही थी। तो ये भी साइंटिफिकली प्रूवन है कि गैप बढ़ाना चाहिए। जी सर। थैंक यू सो मच सर। इतना ही क्वेश्चन आंसर सेशन में इतना ही है सर। थैंक यू सो मच फॉर sharing such informative ideas and knowledge about the very frequently asked questions on COVID vaccine. और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आपसे फ्यूचर में भी इंटरेक्शन हो पाएगी और आपसे और भी जानकारी मिल पाएगी हमें। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग विद अस टुडे। We'll move on to the next session further. But before that, we'll just have a 5 minutes break,
and we'll engage that break with a preview about the current scenario of COVID-19. So please take a 5 minutes break and we'll come back with the next session when our next speaker joins with. इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। Thank you. We'll go on with our next session. I would just like to know, has Shailendra sir joined us? Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. I would like to welcome our next guest speaker for the day, Dr. Shailendra Mahanta, sir. Dr. Shailendra Kumar Mahanta is currently a professor in the Department of Pharmacology and Pharmacy Practice. He is also the president of Nirmala Innovations and Incubation Center and Innovation, ambassador designated by the IIC MHRD, Government of India. He has 2 years of experience as research associate at the Biological Research Division, Glenmark Pharmaceuticals, Maharashtra. He has received a research grant from a short-term research for the research work titled Artificial Intelligence-Based Elucidation of Mechanisms of Rifampicin Resistance from Tuberculosis Association of India. And he has to his credit more than 10 publications in the international peer-reviewed journals such as Applied Materials and Interfaces, Biointerfaces, and RSC Advances, to name a few. He has also served as co-convener in the Science and Engineering Research Board, DST, Government of India. He is currently the lifetime member of Association of Pharmacy Professionals of India. I would request Mr. Santosh Jha, sir, Vice Principal of Om Sadashiva College of Pharmacy, to welcome our guest of honor for the second session. Thank you very much, Snigdha madam. I, Santosh Kumar Jha, Vice Principal and Coordinator of the webinar, heartily welcomes Dr. Shailendra Mahanta sir, Professor, Nirmala College of Pharmacy, Andhra Pradesh. Sir is having more than 10 years of academic and research experience. He is our speaker for the session on management of post-COVID complication as today's topic. As we all know that this topic is more concerned as second wave COVID outbreak. I, on behalf of Om Sadashiva College of Pharmacy, assure you all the participants that this session will be very much informative and which we will be sharing with the Shailendra sir. So now I would like to welcome Shailendra sir to take that dais and he will start our session, next session. Okay, my voice is audible to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, thank you very much for the generous introduction of mine. I thank the management and the principal of Om Sadashiva College of Pharmacy for providing me this opportunity to be the speaker for this event. Now, I would like to straight away move into my session. And I request the host to please allow me to share my screen.
Hello, sir. Yes, whether my screen is visible to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Yes. So today we are going to discuss about the management of post-COVID complications. What type of complications we see. Before going into the topic about managing how to manage this post-COVID complications, we should know that the patient of COVID has already undergone a rigorous phase of inflammation throughout the body. Different parts of the body have encountered inflammation. Different parts of the bodies have encountered the stress. Different parts of the bodies have encountered the toxicity due to various drugs that we have taken during this COVID situation. We have taken a lot of drugs during this particular COVID situation. It started with ivermectin. We took a lot of medications, particularly azithromycins. We have already taken corticosteroids, and different level of medications have been taken by different level of patients at different point of time. Now, during this particular COVID-19 condition, lot of people were associated with lung-related disorder, cardiovascular-related disorder, kidney-related disorder. And just name me one organ which this particular virus has avoided during this period of time. Now, it may look very preemptive from my side to say that this coronavirus is having a lot of similarities to a lot of viruses that we have studied before. Some part of it has a similarity to HIV virus. Some part of it is matching with the polio virus. Some part of it is matching with the angiotensin converting enzyme receptors also. And these type of coincidences, I feel it is very unlikely. Now, that is a different discussion, whether it is man-made or it has evolved from nature, but I have never seen such kind of evolution among viruses in nature. So, I'm not going to discuss about the COVID situation, what are the medications have been taken during the COVID situation, but I will be specifically discussing about the post-COVID complications, how the people need to prepare themselves, how the people need to identify what kind of complications you are going to observe after this phase of COVID. So we have a very clear-cut idea that once you are negative in a RT-PCR test, we assume that we are free of the virus and we start moving here and there and do whatever we want. But you should know that you have been gone through a rigorous stress throughout the body with respect to inflammation, with respect to immune response within your body. And after such a huge scale of immune response within the body, you cannot expect to jump into your workplace immediately, or you cannot think yourself to come back to your natural state immediately. So, if you can see this figure, I don't think whether the small letters are visible to you, but I will help you find out the proper way to look at this figure. So if you see what are the different areas this virus has affected after this coronavirus. So you see these are the number of regions where it has affected. It has affected the neurological system, it has affected the lungs, it has affected the heart, it has affected the stomach, it has affected the intestine and liver also. And you cannot identify any one organ where this impact of this COVID has not been there. Now, as per the definition, what is given by the World Health Organization, what is post-COVID? Or otherwise, in technical terms, it is known as long COVID. Now, what is this long COVID? Long COVID is commonly used to describe signs and symptoms that continue or develop after acute COVID-19 infection. It includes both ongoing symptomatic COVID-19 from 4th to 12th week and post-COVID-19 syndrome, 12 weeks or more. So 4 weeks is around 1 month, and 12 weeks is around 3 months. So within this 1 to 3 months post-COVID infection, your body is in such a state where you cannot do your day-to-day activities over a period of time.
Now, what are the post-COVID complications? What we see very frequently. Now, as you can see in this figure, the bolder brown color over here, it says 58% patients suffer from fatigue. What is this fatigue? We are going to discuss in detail about it. But for now, I will try to pick up some important post-COVID complications which most of the people are going to suffer. Just 1 second. So 58% of the people suffer from fatigue. Fatigue can be of various types. You work on a computer, you are not able to work in a computer as frequently as you used to do before. You used to go for a walk, you cannot even barely walk for 5 minutes and you immediately gasp for breathing. So that is also type of fatigue due to muscle fatigue, due to muscles available in your respiratory mechanisms, they undergo fatigue. And because of that, you are not able to breathe properly. There may be fatigue of the muscles because during this lockdown period, most of the people have been restricted to their homes. They are not going to come out of their homes. So with a limited amount of your motor movements, gradually over a period of time, your muscular activity and the functions of your muscular activity will also come down. So never expect that immediately when the lockdown is going to be over, you are going to go out for a morning jogging and you can easily complete a half-an-hour jogging within no time. Try to come into your normal life as slowly as possible. See, you are in a lockdown for 1 month or more. Now, within this lockdown, you never had so much of muscular activity or physical activity. And suddenly you go for jogging in early morning, or you do a strenuous exercise that is going to put too much of load on your muscles of your body. It is going to result in fatigue. Not only fatigue, the other important finding of this long-term effects of COVID is most of the people suffer from headache. Now, what kind of headache? Severe headache, pulsating headache, arising from the left side of the ear to the right side of the ear. And it varies from person to person. So if the doctor asks the patient, you had a headache, which part of the brain it was mostly affected? Some people will say forehead, some people will say back head. But majority of the patients say it arises from the left side of the ear and sometimes it moves down to the right side of the ear. So headache of various types are there. Migraine related headaches are there. Blood pressure related headaches are there. Vasodilation related headaches are there. If there is a vasodilation of your cranial blood vessels, you can also have a headache of because of that reason. And these neurological symptoms will also include attention disorder. 27% people suffer from this attention disorder. They are not able to focus on anything. Now, for most of the people, it might be a new term. What is attention disorder? You can't focus on a particular work for a longer period of time. You're working for a particular project or master's thesis. You are not able to type in your computer for more than 15 minutes. You immediately require a break. You go watch a TV. You see something in your TV. You're not barely maintaining your attention for 5 minutes. Again, you will go and listen some music. You're not able to do that. Again, you will go to your balcony, stay there for some time, and you will like. So these kind of day-to-day activities result in attention disorder. You don't have proper attention to anything. You don't have proper attention to details. And this is one of the very common features. Next, you have anosmia. What is this anosmia? Anosmia is loss of smell. So most of the people who have been suffered from corona over a period of the next 1 to 3 months, people suffer from these long-term effects of COVID-19. And among them, anosmia is one of the features. Now, what is this anosmia? You lose the sense of smell. Previously, if you are using, as we call in Hindi, hing in your kitchen while you prepare the last ingredients for your dal, you apply hing. Hing is so peculiar in smell that even if someone is cooking in the neighbor's home also, you can feel that smell in your home also. That peculiar smell, this asafoetida or hing is having. Apart from that, there are a lot of peculiar smells, particularly with respect to your mosquito repellents, erythrin, 1% solution that is available in mosquito repellents. So most of the people are not able to smell these substances. So even if your mosquito repellent is running in your room, you are not able to perceive that mosquito repellent is really working in the room. But already the fumes of that 1% erythrin solution that is available in your mosquito repellent is already available in your room and you have been consuming it for a longer period of time.
So the sense of smell is totally lost. Now here, next important part is your loss of memory. Now, what do you mean by this loss of memory? Whether you forget really someone, you forget the activities you are doing, or you are forgetting a certain address, forgetting passwords, forgetting phone numbers. No, it is kind of term utilized in this WhatsApp university now, that is your brain fade, or you can say foggy memory. What is this foggy memory? So foggy memory is something that if a doctor is going to ask you today morning what you had in breakfast. Now most people don't focus on what they're eating in breakfast, what they're eating in lunch, what you did after breakfast. So if you start telling the doctor from morning to evening what you have done, you are not able to focus properly. You will miss important information. So when you are explaining to the doctor, for example, morning at 7 o'clock I had bed tea. After that I had my breakfast, read the newspaper, watched the news on the TV channel, and then that pause is going to tell you that you are not able to recollect the memory. What you did after watching your TV, what these important patches of memory that you forget to correlate during explanation is called the foggy memory loss. So it will just appear as a foggy visualization, what I ate in breakfast. So you're not able to recollect exactly what you ate in breakfast because you're not really focused on what you're eating. You're not really focused on what you're doing. You're not really focused on the sequence of events, what you do throughout the day. So memory loss, particularly foggy memory loss, is one of the very common symptoms among post-COVID patients. Apart from that, you have anxiety related disorder. A lot of anxiety related disorders are coming because of related to this vaccination, how many doses you should take, what is the interval of doses you should take. What will happen if there is, I have already taken my first dose and it is already 3rd month and I have not received my 2nd dose. So a lot of anxiety related issues will come to a lot of people. What will happen today? I have gone for shopping, whether I have contracted COVID-19 in the shop where I have gone there. So a lot of anxiety related issues will be there, and a lot of acute anxiety attacks also come to such type of individuals. You are standing in a queue in a petrol pump. Suddenly the man before you sneezes in front of everyone. Now you will be in a state of shock. I'm sure most of the people will be in a state of shock. What will happen to me now? So such kind of anxiety bouts are frequently coming in such type of patients. Most of the people suffer from depression. What kind of depression? You are staying in lockdown for close to 2 to 3 months now, and you are not able to do what you used to do regularly, will definitely put you in a state of depression. There are different animal models with respect to depression, where you enclose the animal in that cage for a prolonged period of time, or you keep the animal in a particular posture by a tail hanging method, and over a period of time the animal goes into depression. So there are a lot of animal models with respect to isolation induced depression, where you restrict the societal contacts with a lot of people and people go into depression. So anxiety is there, depression is there. Fever, what kind of fever? Whether you will be having high fever, what you used to have during acute corona? No, you'll be having unexplained fever. Unexplained fever in the sense you'll be having fever somewhere around 99 degrees, 99.5, 99.6, and that will not explain anything really. Whether you are really having something or you don't have something, why this basal level of temperature is slightly elevated. So most of the people will be having this basal level of body temperature slightly elevated from what we have regularly. Next important thing what we see here is with respect to neurological symptoms is your sleep disorders. So around 11% of people develop sleep disorders. Now why these sleep disorders are coming? Now on an average, a individual sleeps 8 hours a day, right? Now most of the people are at home during lockdown and they try to avoid going out. So what you do at home? Do your work, what is available. If you have a computer, work on the computer. If you have a TV, watch TV. And you eat, sleep, and eat again and do some work at home. So in the process, you find time to sleep during the day also. When you don't have time for any other work and you are really having anxiety, you are having really problem, you try to go to bed and you sleep most often, most part of the day. That is one of the reasons why sleep disorders are coming. Other reasons are you don't have enough melatonin levels.
you don't have enough melatonin levels in your body to induce proper sleep within your body. Again, these melatonin levels are also getting affected due to this coronavirus some way or other, and it is definitely affecting the sleep related process. Another one is sleep apnea, difficulty in breathing related to sleep. You are sleeping, suddenly you felt as if your nose got blocked, or you are not able to breathe properly, and you immediately wake up in the middle of the night gasping for air. So you'll walk around in your balcony for some time. Again, you will come back to sleep and you'll try to go into sleep. So sleep related difficulty in breathing also is seen among 8% of patients. And 7% of patients already have gone into mental health related conditions. 6% have already gone into psychiatric illness. And these are the small, in the violet color at the bottom, you can see 3% patients have developed stroke, dizziness, dysphoria, mood disorders, compulsive disorders, and such type of things are observed here. Now, these are about the neurological symptoms. Now, coming to the respiratory system, what we frequently see, we see cough. Cough is a very common feature after acute corona infection, and it stays for around 1 month to 3 months. If you're lucky, you may get rid of it within the first month itself. And most of the people have it till the end of the 3rd month. And most people still have persistent cough even after the end of 3 months. And it's a very persistent long COVID symptom, what we see frequently among most of the people. Apart from that, people have polypnea, chest pain, discomfort, and people have loss of taste also. You lose the taste, and redness of eyes is also very, very common among most of the people, those who suffer from this corona infection. Apart from that, another major component here is loss of hair. 25% people had a loss of hair during this coronavirus infection. Now, there may be a correlation, there may not be a correlation, but you should know hair fall loss is due to loss of hair follicles in your scalp. Now, hair follicles are one of the fastest growing cells in the body, along with gastrointestinal cells. Now, gastrointestinal cells, we know, are already affected with COVID-19. The lot of studies are going on with respect to association of hair follicles with respect to this coronavirus, and how these viral proteins affect the follicular growth in our scalp. And if follicular growth is not there, you won't be having proper hair on your scalp, and whatever old hairs you are having, you are going to lose those old hairs also. So 25% people have lost their hair. Hearing loss, tinnitus is very common. Some people have explained about it. People have explained nauseating behavior, dyspnea, difficulty in breathing, pulmonary fibrosis. What is this pulmonary fibrosis? I'll give you a very simple example so that you can understand what exactly is pulmonary fibrosis and how exactly you are going to feel in cases of thickening of the pulmonary layers, or you are having pulmonary fibrosis. Suppose you are taking a balloon, you just blow air into the balloon and you can expand the balloon into as big size as you want. Very easy. The reason being simple, the thickness of the balloon's layer is very small, very thin. So whenever you are blowing air, your lungs are having the enough force of air to push it into the balloon. So there is less negative resistance within the balloon to flow the back, allow the black flow of air into your lungs. Suppose now I'll ask you, kindly blow the air into a cycle tube, whether it will be easy for you to entirely blow air into the cycle tube. No, not possible. And it will be even more difficult if I give you a truck tire and ask you to blow air into the truck tire. Reason being very simple. The thickness is gradually increasing. Initially, you had a balloon where the thickness was very small. Next, you went into a cycle tube, the thickness was slightly more. You go into a truck tube, it is even thicker. So you will hardly blow any air into it. The same thing happens with our lungs also. The thickness of our lungs, particularly the outermost layers of the lungs, they become very thick. They become more fibrosis. And whenever fibrosis of the lungs happen, the elasticity of the lungs is lost. You will have more amount of fibers in the lungs. And because of that, your fibers don't have enough elasticity left in them. So whenever you are trying to inhale air, you will be taking very less amount of air rather than the full amount of air. In pulmonary fibrosis also, we have a regular tidal volume of around 500 ml. But on a regular practice, do we really take 500 ml of air in our regular breathing? No. Most of the people right now are doing desk jobs. Some people are doing jobs where at least 30% or 50% of the people are having desk jobs. So while you are doing a desk job,
while you are doing a desk job, have you ever observed whether you are really inflating your lungs with your regular breathing? No, you will take less amount of air. Less amount of air is being exhaled. Now this has been our way of breathing over a period of time. Now suddenly, if you say a person has got infected with coronavirus, and I want him to breathe properly, which he has never done in his past life because of his regular desk job, and you suddenly ask him to do pranayam, you suddenly ask him to do all kind of breathing exercises in order to inflate your lungs, it becomes very, very difficult for the patient to handle such kind of activities. So if you have a habit of doing it, you can do it very nicely. If you don't have a habit of doing it, it will be really painful for you when you are going to do these breathing exercises. Because whenever the lungs will be having this pulmonary fibrosis, forceful inflammation of the lungs is going to create pain in those tissues. So due to pain also, most of the people are not able to utilize the full vital capacity of your lungs. Next, your lungs pulmonary capacity is going to come down. Kidneys get affected, particularly the nephrons of the kidneys get affected. You lose too much of creatinine, you lose too much of protein from your blood, and most of the people will be having protein, particularly human serum albumin, leaking from their blood into the kidneys, from kidneys into the urine. People will be having high glucose levels, high calcium levels. So electrolyte imbalance is also there. Protein imbalance is also coming. Apart from that protein imbalance, you are also having damage of your nephrons. Your creatinine levels are also increasing. Now, you are losing protein through kidneys, and that protein is being found in your urine. Now, this protein consists of your human serum albumin, which is primarily synthesized in your liver. Now, it has been shown in certain studies that the liver function gradually deteriorates after your acute infection of coronavirus. So most of the enzymes responsible for metabolism of your drugs, metabolism of your food products, metabolism of your nutrients, everything slows down. And human serum albumin, as you know, is primarily synthesized in your liver. And when your liver function falls down, your human serum albumin levels in your body will also fall down. Apart from that, in addition to it, you are also losing human serum albumin from your kidneys into urine. So overall, your human serum. Yes. कल तो आया है इधर एक दिन ना है तो क्या होगा Can you please mute yourself? With those who are talking at the background, please mute yourself. Extremely sorry, sir, for the disturbance. So please continue. Yeah. So when your liver function is gradually deteriorating, your human serum albumin levels are gradually falling. And as you know, 99% of most of the drugs what we take get bound to human serum albumin initially before being distributed into various distribution sites. Now, what will happen if your human serum albumin levels fall down drastically over a period of time after acute coronavirus infection, and you are constantly taking the recommended dose as is prescribed by the doctor based on your body weight? So you may be a 70 kg individual, but your body is not having that kind of concentration of human serum albumin that should be there in your body to absorb the drug before distributing it to various target sites. So your plasma levels of the drugs will increase. So when your plasma levels of your drugs will increase, you will have higher pharmacological activity of those drugs. So that will result in toxicity. So this is related to the liver. This kind of problems we are frequently seeing with respect to liver. Next important thing what we usually see is joint pain. This joint pain is very frequent with respect to coronavirus. Some part of it is related to skeletal muscle related problems. You try to accumulate a lot of 1 minute. Okay, some people try to retain a lot of water in their skeletal muscle tissues, and because of that, edema will be there. And most of these COVID patients, they will be suffering from ankle-related edema, joint-related edema, muscle-related edema, lungs-related edema. So you will keep accumulating water in the nearby tissues of your blood vessels, in and around the joints, ankles, particularly in case of females. Ankle related edema is very, very common in this acute coronavirus infection, post acute coronavirus infection. Apart from that, if you see in heart, you will be having arrhythmia, myocarditis, that is inflammation of the myocardium. Now, as I told you, after coronavirus infection is over, your body has undergone
stiff resistance from inflammatory components, and there is a strong fight between the immune reaction of the body and the inflammatory components in your body. Now that inflammatory components are not restricted only to blood vessels, heart, lungs, intestine. They have been there throughout your body, wherever these tissues are there, and whatever receptors are present over there. Based on that, that inflammation has been throughout your body, including your blood vessels, your major organs of your body, and because of that, heart will be also having myocarditis, that is inflammation of your muscles. You will be having discontinuous flushing, you will be having palpitations, resting heart rate will increase. Resting heart rate increase means you are sleeping idle. Suddenly you had some thought process, and your heart rate will continuously increase, and that will increase reflect in your pulse rate also. So most of the people who are long COVID or they are post COVID, they will be having this heart rate constantly elevated, somewhere around 80 to 90. In that range, they will be having it frequently post COVID or during the long COVID situation. So briefly, I have tried to explain about you what are the different types of problems people are going to face, and the majority ones are fatigue, headache related to lungs and cardiovascular system. Now we'll come to the next slide. The slide has got stuck. Okay, now who are the people who are going to get this long COVID? I've already defined what is long COVID. Up to 4 weeks, up to 12 weeks. The duration is called long COVID, or even beyond that is also included under long COVID. Now, which type of people are more prone to getting long COVID? People, somewhere around 2.5 to 15% of the people who are still symptomatic greater than 12 weeks are bound to have long COVID like symptoms. You can go for a test for, again, you can check your viral load in your body, and you can see what is the status of the viral load in the body. So if the viral levels are still there after 12 weeks of post COVID situation, now see, most of the COVID tests will tell you based on the RT-PCR tests. Now this RT-PCR test will tell you whether you are having your viral load beyond a certain point, yes or no. If your viral load is beyond a certain point, you are positive. If the viral load is below a certain point, you are negative. So, but still the viral load is there. Until and unless the entire viral load comes down, you are bound to have some or other type of symptoms throughout the body. Now, factors that appear to be associated with greater risk suffering from long COVID are increasing age. So most of the people who are geriatrics, who are old age peoples, they are bound to suffer with this long COVID situation. People who are having a lot of body weight, people who are suffering from obesity, and particularly females are more prone to long COVID-like conditions. People who are suffering from asthma, they are having a weak lung status, they are also supposed to get this long COVID situation. Apart from that, multiple additional symptoms when you present it to a doctor. It may be headache, it may be loss of taste, it may be loss of hair, it may be palpitations, it may be chest pain, it may be joint pain, it may be ankle related edema. So all these multiple symptoms, if it is present with you and you are presenting to a doctor, the doctor is definitely going to categorize you under the long COVID condition. Now, patients who may not have had a positive COVID test but still carrying these symptoms. So whatever symptoms I discussed in the previous slide, you may not have a COVID infection, but if you are carrying these symptoms, you are also still categorized under long COVID situation. So don't think that if I'm not COVID positive and I'm having these symptoms, I'm coming under the category of long COVID. So even if you are having these symptoms, you are also categorized under long COVID condition. Now, children, now studies have been done in approximately 750 children across the globe, and the study reports that 15% of the people in the children in the age group of 12 to 16 year old, these people are having long COVID-like symptoms. So they may not be having full viral load in their body, but the symptoms indicate they are also categorized under long COVID conditions. So around 15% of the children in the age group of 12 to 16 are also suffering from this long COVID situation. Now, what are the most common symptoms associated with this long COVID situation? I've already discussed in my first slide what are the symptoms, but I will now discuss with respect to the
major symptoms, and these major symptoms include fatigue, respiratory symptoms, musculoskeletal disorders. You will be having neurological disorders. You will be having cardiovascular disorders, gastrointestinal disorders, general symptoms like fever, metabolic conditions, psychiatric or psychological conditions. And if you can see, fatigue comprises of 93% of the people. So 93% of the people suffer from general and post-exertional fatigue. So as I told you, you had a coronavirus infection. Immediately you went for a morning walk. You could barely walk for 5 minutes. And during those conditions also, you are going to suffer from this fatigue. And mostly around 93% of the people suffer from this fatigue. Respiratory symptoms comprise of, that is shortness of breath. 81% of the people suffer from this respiratory problem, that is shortness of breath, and persistent cough. Cough which is persistent, mostly dry cough. Sometimes it is productive cough, but due to less amount of water within the body, sometimes this persistent cough also bothers people beyond 3 months also. Musculoskeletal disorders including pain. Muscular pain is there, particularly skeletal muscle pain and muscle fatigue. So what kind of muscle fatigue? You are not able to walk properly. You went from one room to the another. You felt so tired. Immediately you go into sleep into another room. You find a bed to sleep. You are barely able to walk 10 to 20 meters. So that kind of muscular fatigue also is seen around 72% of the people. Neurological conditions, I told you, headache is one of the prominent neurological condition associated with long COVID situation or post-COVID situation. Apart from that, you will be having neurocognitive disorders. 46% of the people suffer from it. Dizziness is also around 46%. So you will be having foggy memory. You will be having incoordinated memory related tasks. So all these things will be associated with neurological conditions. Among cardiovascular conditions, palpitations, arrhythmias, postural tachycardia syndrome. Postural tachycardia means you're sleeping, suddenly you try to get up, immediately you will be feeling pounding of your chest due to increased beating of your heart. That is known as postural tachycardia syndrome. And these kind of symptoms are also experienced around 25% of the people. Mostly people suffer from palpitation and arrhythmia, around 42%. Now, gastrointestinal conditions include nausea, bowel changes, indigestion, around 41% suffer from it. General conditions including fever, you have chest pain, rashes, and anosmia. That is what I told you. You'll be losing the sense of smell. And metabolic conditions including worsening of diabetes, underlying metabolic disease. So people who are suffering from diabetes, they have to be extremely careful. I'll come to it in my subsequent slides why they need to be more careful. Psychiatric conditions, particularly sleep disorders and mood changes, are also very frequent. Now coming to the first symptom, that is your fatigue. Now what kind of fatigue you are going to experience? So most consistent and persistent symptoms throughout the world is your fatigue. Now what kind of fatigue you can get? Physical fatigue. That is when you reduce your physical activity and suddenly you go for an activity which requires higher physical activity. Muscle fatigue is going to keep you in problem. For example, during this lockdown, you stayed at your home, you didn't go outside. So you didn't go outside, you never drove your car, and suddenly you take your car and you want outside, go outside and you want to drive for around 50-60 kilometers. Now while driving, you require frequent movement of your feet with respect to your clutch behavior, with respect to your accelerator behavior in your car. And now since you have not drove your car for last 2 to 3 minutes, suddenly you feel a lot of pain in your joints, lot of feel in your muscles while driving your car. And you can barely drive your car for hardly 5 to 6 kilometers. So this is also a kind of situation where you have physical fatigue. Sensory fatigue in the sense experiencing pain throughout the body, and hypersensitivity. Pain throughout the body in the sense particularly numbness in the particular motor organs. Pain when you touch a particular tissue in your body, particularly sciatica related pain, joint related pain, and your waist pain. Okay. And hypersensitivity behaviors. What kind of hypersensitive behaviors? You are very, very sensitive to touch now. Previously, even if your mosquito is sitting in your skin, you are not able to react to it. Now, even if something touches on the surface of your skin becomes very hypersensitive. So very hypersensitive to touch. So what kind of symptoms people experience? Sometimes people are wearing their shirt.
While wearing the shirt itself, they will feel pain in the surface of your skin. So that makes your skin very hypersensitive. So people who usually sweat, that is very common. But whenever you are experiencing sweat also, that is causing pain in the surface of your skin. So those kind of sensory abnormalities, sensory hypersensitivity conditions appear on the surface of your skin. Apart from that, you will be having reduction in functional abilities, which may delay or prevent your return to work and perform normal functional activities. Okay, what kind of functional activities you face problems? Suddenly, after lockdown, you're joining your office. You're joining your office and you're going for your office related work, and suddenly you forgot your keys at your home. You are going to your office, you require to submit certain documents at your office, you forgot in which drive of your computer you have kept those folders. So in a way, most of your day-to-day activities get affected due to your memory, due to short-term memory or your memory loss or foggy memory. Most of the day-to-day activities get affected. Physiological conditions, for example, frustration, anxiety-related depression, because you have been inside the home for 2 to 3 months now at a stretch, and because of that, lot of physiological changes will happen in your body, and frustration, anxiety, all these things will take over, and that is going to result in physiological fatigue as well. Cognitive function, memory loss that I discussed previously, that is, you will be having foggy memory. You won't be able to recollect all the things in a proper way. Previously, you used to remember the mobile phone numbers of your near and dear ones, but now you have to look into your mobile phone to find out what is the phone number of so and so person. So previously you used to remember all the phone numbers. So such kind of small things, small problems you are going to face on a day-to-day basis, resulting in fatigue. So what are these causes of this fatigue? First one is your muscle weakness. Now muscle weakness is because you have not done any muscular activity during the last 2 to 3 months. So you didn't do any muscular activity except for your regular breathing exercises or your pranayama or whatever yoga you are doing. You've not done any brisk walking, you have not done any conditioning for your muscles, and because of that you will be developing fatigue. Routine disruption in sleep, particularly with respect to diet, with respect to work. Why sleep? Because you are always at home, you sleep whenever you want, you wake up whenever you want, and there is a total change in your biological rhythm. That is, your biological rhythm for your body usually follows your circadian rhythm, and this circadian rhythm is totally gone. You never go out of your house, you are never out in the sunlight, you don't have a perception whether it is day or night inside your room. So that kind of routine disruption will be there in your sleep, with respect to your diet, with respect to your work. And this anxiety, stress, and depression from various sources have come during this lockdown period. Some people have lost their jobs. Some people are not sure whether the salary will be credited in their accounts or not. Some people don't know whether customers will visit my shop or not. So a lot of anxiety related conditions have also caused a lot of fatigue in a lot of people. Apart from that, you have this immune system where the cytokines, mast cell activation syndrome, and all these things will make the matter even worse. So these inflammatory components will be there throughout your body, and whatever basal level of temperature that I discussed previously, that most of the people will be having some basal level of temperature, and that basal level of temperature will be consistent around 99, 99.8, 99.5. It will never go beyond 100, but it will never go beyond 99, below 99 also. So that basal level of temperature is because of this basal level of activity of cytokines and mast cell activation throughout your body, and because of those reasons also you may have this basal levels of body temperature. Apart from that, you may have coexisting health problems. For example, a person is suffering from diabetes, a person is suffering from cardiovascular complication, a person is suffering from liver disorders. Now all this fatigue is going to aggravate those situations, particularly diabetes and cardiovascular patients, apart from these liver related disorder patients. So persistent fatigue continuing past the infective period is a feature of COVID now. Now this is classified under post-COVID condition now, even after COVID situation is over, for the next 1 month to 3 months, and for some people even 9 months to 12 months also, these COVID symptoms are still persisting. So how do you analyze this fatigue? How do you treat this fatigue? How you are going to manage this fatigue? So initially it will start with small amount of fatigue, where you cannot do a small amount of exercise, you cannot do a small amount of physical activity. So when you do have this exhaustion of or this fatigue over a period of time, that is categorized as chronic fatigue.
Now, when this chronic fatigue along with a lot of additional syndromes affect you, that is known as chronic fatigue syndrome. Now, it doesn't happen, chronic fatigue syndrome doesn't happen in 1 day or 2 days. So unless and until you have been experiencing fatigue over a period of 1 month, 3 months, or even more than that, you are not supposed to get chronic fatigue syndrome. So people who have been experiencing this fatigue over a period of time consistently, these people will be developing this chronic fatigue syndrome. Now, this fatigue experiences fluctuates from hour to hour, day-to-day basis, and different mental status and different physical activities will affect this fatigue condition. Now, these are some of the symptoms of your chronic fatigue syndrome. So initially you will be having post-exertional malaise, that you will be having pain in your muscles, you're not able to work properly, you're not able to hang your clothes for drying. So those kind of small activities also you're not able to perform. That will cause muscular pain and that will reduce your muscular weakness. You cannot lift even your buckets of water, 2 buckets of water also. You cannot lift your buckets filled with clothes also. So those kind of muscle weakness will gradually come into picture. Apart from that, feeling dizzy, lightheaded, needing to sit or lie down more frequently. Feeling dizzy means you're sitting watching TV, suddenly you want to walk up and move somewhere. Once you stand up, immediately you'll be having reeling sensation in your head. So that is feeling dizziness, lightheadedness. Next, you will be requiring more rest and more sleep. So it is not that you are not going into bed. You go to bed, but the quality of sleep gets affected. That is why it is known as unrefreshed sleep. You have frequent altered mood. Now, low mood and motivation, you don't see anything positive happening around you. Lockdown is increasing day by day, vaccine shortages, many things will bring your mood into very low levels and your motivation levels also fall down. And because of that, you develop cognitive disturbances. What kind of cognitive disturbances? I told you about what is this brain fog, what is poor memory and poor information related conditions. So these things are very frequent. Apart from that, other unexplained symptoms are also there. So how you're going to manage this fatigue? So for managing this fatigue, first you need to reassure yourself that you are going to be normal. Unless and until you have some amount of positivity within yourself, no matter how best efforts your family members or your doctor is putting on you, you are not going to come back into normal condition. Make a routine for your day-to-day life, just like a timetable. What you have, if you're an academician, you must be having a timetable. Morning 9 o'clock, I am having a class. Next class is at 12 o'clock. Next practicals at afternoon session. So you remain prepared for your routine, right? So in the same way, you have to plan a routine, plan a timetable for your day-to-day life, where you have to follow certain sequence of events, and you have to constantly follow that sequence of events over a period of time. For example, you get up early in the morning around 6 o'clock, do some breathing exercise, put it into some kind of chart, which you see on a day-to-day basis, on a day-to-day regular basis, and you follow those chart over a period of time, so that your day-to-day activities are there fixed on a chart. So even if you are having foggy memory also, go back to your chart, go through that chart, and immediately you can recollect what are the things I need to do in the rest of the part of the day. Gentle activity with self-assessed limitation. Gentle activity in the sense, previously you used to have a brisk walking for half an hour. You used to go for a morning walk. Don't try to compare yourself with what you were previous to COVID-19 infection. What you are now, you need to assess yourself, and accordingly you want to do your exercise. Some people will say, I used to do 10 push-ups per day. Now even I cannot do even 1 push-up per day. Okay, it's fine, because your body status has changed drastically. Your muscular activity is 0 now, and your muscular strength is 0. You cannot do the same kind of activities what you used to do previously. So accordingly, you have to self-judge yourself. You have to assess yourself, and you have to figure out what is best for you. Next, you have to look for rest. You need to look for sleep, proper sleep. Hydration is very, very important. You need to have yourself hydrated all the time. Dehydration is one of the very big problems associated with coronavirus infection. You get frequently dehydrated. So hydration is very, very important. You should have a balanced diet, where you should take care of a lot of nutritional benefits rather than the volume of food. See, previously you used to go outside for your work, and your physical activity used to be very high. So people used to take 3 chapatis, 4 chapatis along with small amount of sabji or something on your plate. But when you're staying at home, you don't have too much of motor activity, don't have too much of physical activity.
Even if you are having that amount of nutrition at home with no amount of physical activity, that is going to add too much of calories into your body, and that will result in obesity. So during this lockdown period, you must have seen most people have gained weight. Some people have utilized this time to do a lot of exercise and they have reduced weight also. But most of the people have gained weight during this lockdown period, this coronavirus period. Of course, there are a lot of medication related issues also that resulted in weight gain. But the majority of the issues is related to nutrition. You have not taken proper amount of nutrition. You have provided over nutrition to your body, and because of that, you build up extra amount of calories in your body. So apart from that, patient information leaflet should be provided to the patient. So how you are going to handle this fatigue? The doctor should provide a patient information leaflet. What should be your strategy throughout the day? Such kind of leaflets should be there with the patient in order to fight fatigue related condition. Next important part is your acute respiratory disease syndrome. Now, why I have told acute respiratory disease syndrome is your disease status of your lungs is not limited to 1 or 2 conditions only. You are having a variety of conditions. Now, what kind of conditions? You are having cough, you are having irritation in your throat, you are having too much of lacrimal secretion, you are having too much of nasal secretion, you are not able to breathe properly. When you are breathing, you feel pain at the back of your lungs. So a lot of syndromes or complications are associated with your normal lung disorders. That is why it is categorized as acute respiratory disease syndrome. Now, what happens in this acute respiratory disease syndrome? So as you know, this COVID-19 directly affects and impacts your lungs. So what it damages? It damages your alveoli and all the air sacs. Now, these alveoli are very, very important to us. Why? Because their function is to transfer oxygen to the blood vessels, and these blood vessels will further carry this oxygen into the red blood cells, and from these red blood cells, again this oxygen is going to deliver to all the internal organs of the body. Now, at the first place itself, if the alveoli get damaged, there is no chance of transfer of oxygen to the blood vessels. So immediately your oxygen transfer level falls down. Now, this is the major problem associated with coronavirus infection. Your transfer of oxygen to your blood vessels is reduced drastically, and that is why your oxygen level falls down rapidly during this coronavirus infection. Now, this virus not only damages your alveoli, it also damages your capillaries. Now, capillaries are also the regions where there is exchange of oxygen between the major blood vessels and the minor blood vessels. So even your capillaries get damaged, your alveoli also get damaged. The debris from the damage, what type of debris has accumulated in your lungs? Particularly plasma protein. Cells have got damaged. Your cells have lost a lot of cytosolic protein into the lungs. Even your blood vessels got damaged in some regions, and a lot of plasma proteins got precipitated. So all of these degraded end products keeps on accumulating in the alveoli wall, and it blocks off your wall. Now, when this alveoli gets blocked off, your lining above the alveoli gets thickened. As you know, the thinner the contact point between the alveoli and the atmospheric air, the more amount of oxygen transfer will be there. Now, when you have more amount of layers above this alveoli, your lung thickness increases. Now, when your lung thickness will increase, a lot of difficulty will be there by forcing the oxygen through that invisible wall into the alveoli and then into the blood vessel. So previously, whatever effort you used to put to get the oxygen into the blood vessel, now you have to put more amount of effort in pushing that oxygen into the blood vessels. So this lack of oxygen in your internal organs is going to take a toll on your organs. So finally, your organ related efficiency will fall down. Organ related physiological functions will also fall down. So that is why muscle related. That is why you see muscle related pain, joint pains. Muscles require a lot of oxygen. When you don't give a lot of oxygen to the muscles, muscle related pains are definitely going to come. And this is going to be very clearly evident in your cardiac muscle. So when your cardiac muscle also don't get proper amount of oxygen, frequently you will be experiencing chest pain. Frequently you will be experiencing pain while you are inhaling, trying to inhale a lot of air into your lungs. So when your lungs start to inflate because of the thickness of the walls of your lungs, and because of that also you'll be experiencing a lot of pain. People also suffer from pneumonia. So whatever air sacs, alveoli, whatever you are having, all get damaged. It is filled up with liquid,
And what kind of liquid? Mostly it will be mucus, inflammatory cell components, protein debris. All these things keep on accumulating in your lungs, and your air sacs are totally filled with it. Now, when your air sacs are totally filled with it, there is no chance that the oxygen from the atmosphere can make its way to your blood vessels. So this immediate contact point is blocking everything here. Apart from that, there is no specific treatment guideline, particularly for treatment with respect to pneumonia in case of a COVID-19 patient. And mostly, most of the people are given supportive care therapy. That's it. You are not getting any particular dedicated therapy for pneumonia or all those conditions during COVID situation, due to a lot of complications arising due to the usage of drug molecules. So one of the major problem you face after this acute COVID is your post-COVID breathlessness. You are not able to breathe properly. So your vital lung capacity falls down, your tidal volume falls down. Overall, if you see, the secretion in your chest has increased. Because of that, you feel all the time that your chest is very heavy. Heavy in the sense, you are not able to breathe properly, and you feel chest tightness. That is a very common problem associated with most of the patients. Oxygen saturation levels are low, and this thing takes around 3 to 6 months post a COVID-19 infection to normalize. In some patients, it is even beyond 6 months also, and sometimes it takes up to 12 months after COVID-19 infection to come back to normal. So how do you manage this post-COVID breathlessness problem? So first you need to position yourself properly. What kind of positioning you want to do? You should position yourself in such a way that your lungs can inflate to the maximum possible position, and that can be possible only where your spinal cord is placed straight to the rest of the part of the body. So you sit in a relaxed position and keep your spinal cord straight. So when you keep your spinal cord straight, your lungs have the maximum opportunity to push downwards, because your diaphragm will be present at the bottom of your lungs. So diaphragm, when it is going to contract, it is going to move downwards. So when diaphragm is going to move downwards, your lungs have a lot of space to expand. And at that time, when you are taking deep breaths in and deep breaths out, you will be increasing the oxygen levels in your body. Slowly pace out. So do small amount of lip breathing exercises. Use your lips to lock in air within your mouth, and use your lips to blow the air out of your mouth. So that lip breathing exercise is also going to benefit a lot. Apart from that, you should do your works very slowly. Don't do prolonged works. Don't sit before a laptop for a long amount of time doing work. Don't do prolonged activity which is going to put a toll on your body. So pace your work slowly, do your work slowly. Other things are, put wet flannel cloths on your cheek and your nose. So when you will be doing this exercise, some people develop flushing like conditions where you will feel your skin surface is getting warm. You want to cool them down, just apply a wet cloth on the surface of your cheek or your nose, so that cool air goes into your lungs when you are breathing. Do some relaxation exercises and encourage yourself to avoid stress. So these are some of the exercises usually prescribed by the doctors. Different levels of exercises are there. How you need to do these exercises, how you need to move with respect to all the steps in the exercises. Level 1, level 2 and level 3 are there. So once you complete this level 1 exercises, next you have to move to level 2 exercises. So level 3 exercises are also there. So these are the level 1 exercise what you have here. So you have deep breathing exercises, you have blowing exercises, you have ankle pumps. How many ankle pumps you need to do, how many hip and knee bends you need to do, how crossing your legs in your bed can affect your hip movement, particularly hip rotation also. Do some arm stretching exercises. Try to touch your back of your neck by folding your arms through your back. Try to touch your upper back by different bending exercises. And after each set of these exercises, you need to do 10 minutes of relaxation. So after 10 minutes of relaxation, again, you can continue with those kind of exercises. And you can repeat these set of exercises 2 to 3 times a day, initially in one session. Okay. So once you have done with these level 1 exercises, then you can move to level 2 exercises, where you can start with a very few exercises of level 1, and gradually you can increase the number of sessions per day.
Okay, so keep on increasing the number of sessions per day, and you can have more number of levels in these exercises. And based on that, level 1, level 2, and level 3 exercises are designed. So next one is your cardiovascular complications. So what type of cardiovascular complications you get? Basically, you get myocarditis. It is most of the people suffer from myocarditis. People suffer from acute myocardial infarction, heart failure, cardiomyopathy, arrhythmias, shock, cardiac arrest, and various thromboembolic events. Now, myocarditis is very common. Apart from this myocarditis, you will be having inflammation in your heart. So what kind of signs and symptoms you are going to experience when you are going to have a myocardial infarction related attacks? So first you need to identify those symptoms so that you immediately report to a doctor and get yourself admitted to your hospital if any of these complications or signs and symptoms are coming. Now, which type of age group of people are more affected by it? People who are having comorbidities. That means you are having more than one diseases with you: lung disease, renal disease, diabetes, hypertension, cardiovascular disease, all these things. Apart from inflammation, you are having joint pain, coagulation related disorder. If you are having all these risks, you are more prone to these kind of cardiovascular complications. Now, how you are going to identify these kind of cardiovascular complications? First one is your acute myocardial infarction. Now, you are breathing regularly when you are at sleep. Now, when you are sleeping and during the process of your breathing, if you are not able to breathe properly, if you require more amount of effort for breathing, you are having chest pain during breathing when you are at rest, you should be an acute myocardial infarction related patient. Immediately consult a doctor, visit your doctor, because you may get a myocardial infarction attack, or you may have a cardiac failure immediately or within a short time. So immediately visit a doctor and report to him that at resting condition also you are experiencing pain in your heart and breathing related difficulties are also there, and apart from that you are having high heartbeats while at rest also. So apart from that, these people who are having this COVID-19 acute COVID-19 post-COVID situations, they suffer from hypertension also. This is one of the major comorbidities along with other comorbidities. So people who are having this hypertension, if you're going for this angiotensin converting enzyme inhibitor blockers, you should be continuing those medications for regulating your blood pressure. Apart from that, acute coronary syndrome, where you should be doing a ECG very soon, every 3 months, and you should monitor your ECG. Apart from that, you should constantly monitor your troponin levels. Now, these troponin levels are very, very important. Now, these troponin levels are an indicator that there is something wrong in your cardiovascular muscles, and this is going to affect your cardiovascular system. So you should definitely check your ECG levels and your troponin levels, and you should consult a doctor immediately. So apart from that, there are certain recommendations that tell you that if you are having had a cytokine storm during your acute COVID-19 infection, and in your post-COVID-19 infection, you should immediately visit your doctor every 3 months, and you should get your ECG done and your troponin levels checked every 3 months, and you should have a follow-up with the doctor for next 6 months. Because your entire cardiovascular system, your entire blood vessels, everything went ahead with the cytokine storm, and they have bore the brunt of this cytokine storm, and they have damaged. There will be some kind of damage in those blood vessels in your cardiovascular system. So once every 1 to 3 months, you should visit your doctor, get a ECG done, and your troponin levels checked over a period of time. Also, people who are suffering from this left ventricular related disorders, they should also look for conduction abnormalities, particularly myocardial scars, if at all it is present with those kind of patients. Next you have is your diabetic complications. Now, diabetes is a very difficult situation where you need to maintain your blood sugar levels, and people who have suffered from these acute COVID-19 conditions, who have also taken this corticosteroids, they are in a very difficult situation. Now, these corticosteroids are going to help you add weight to your body. It is going to prevent the control of your blood sugar levels in your body. Apart from that, the pro-inflammatory cytokines, particularly IL-6 and TNF-alpha, these are going to worsen the situation for diabetic patients. So in such kind of diabetic patients, where the situation is going to be even worse when the patient is also having hypertension. So diabetes plus hypertension, diabetes plus hypertension plus kidney disease, diabetes plus hypertension plus kidney disease, and coronary artery disease is a very dangerous combination. So in such conditions, it is very, very difficult
to treat such kind of patients, and particularly if they are old age patients suffering from diabetes, it is a very difficult combination of such conditions like hypertension, you've got diabetes, you've got chronic kidney disease and coronary artery diseases. Next, then what kind of challenges you have in maintaining this managing this diabetes condition? So there should be some lifestyle changes, particularly what with respect to physical activity and exercise. So you should be doing a regular physical activities. No brisk physical activity should be avoided, and basic minimum physical activity and exercise should be there. You should routinely do your yoga and find innovative ways of doing enhanced physical activity. Reduce your stress and anxiety and your depression, because that is going to make your things very complicated with respect to diabetes. Find a way you can maintain your glucose levels with the available medications and the diet you are taking. As I told you, during lockdown and all those situations, you never went outside, didn't do any physical activities, so you don't require that much of amount of calories what you used to do previously. So your calorie requirement in your body also falls down. So accordingly, your glucose level should also be regulated. So in such conditions, insulin is a better option for controlling your blood sugar levels, but be careful about hypoglycemia. Don't overdose yourself with insulin, because your nutritional balance has also changed during the period. So whatever the doctor has advised, again visit a doctor, find out the proper dose of insulin that you require now, and you accordingly you can use insulin. Metformin also you can use, but there is a risk associated with it, particularly with respect to lactic acidosis, and people can lose their blood volume or plasma volume very frequently. Apart from that, specifically you should be careful regarding the use of SGLT2 inhibitors. So these inhibitors are particularly contraindicated in this diabetes condition. You should avoid this SGLT2 inhibitors, and this is responsible most of the fluid loss that happens within the body. And with respect to ketoacidosis, SGLT2 inhibitors are primarily responsible. So avoid SGLT2 inhibitors. Apart from that, there is a hypothesis that insulin resistance, if it is present in the body, that facilitates inflammation, and that improves or increases the concentration of inflammatory markers. For example, your C-reactive protein, your interleukin-6, TNF-alpha, and such markers as fibrinogen and all those things get elevated within the body. So you should be very careful regarding insulin resistance also. Last, we will come to a condition which is very frequent nowadays, and people are very familiar with it also, mucormycosis. Whether mucormycosis and your black fungus, yellow fungus, white fungus, violet fungus, any kind of color of fungus, whether it is the same thing or it is the different thing. It is a different thing. Mucormycosis is different, black fungus is different, yellow fungus is different, white fungus is different. Now, this mucormycosis is caused by a mold that is belonging to the species Mycormycetes. Now, some people call it mucormycosis of rhizopus origin, mucor species, Cunninghamel species, Apophysis species, Lysothomius species. Now, most of the people are suffering from this mucormycosis. Now, what is this reason for most of the people to suffer from mucormycosis? Whether this mucormycosis was not present when COVID was not there, it was present. But why we didn't suffer during that time when this COVID situation was not there, and why we are suffering so badly at this point of time? Point is, during the COVID-19 treatment protocol, you have been overdosed with, or sometimes you have been given with corticosteroids that reduced your immune system, suppressed your immune system. Apart from the COVID-19 infection condition, where your immune system got totally paralyzed and your immune system is not able to fight with this virus. So in those conditions, your immunity level in your body fell down rapidly. Now, always you should know, there are some good microorganisms, there are some bad microorganisms. Never think that we as an individual are existing alone. Along with us, a lot of microorganisms are there within our body that are good for our body, that helps us absorb nutrients from our food, helps us getting rid of the fecal matter, helps us in what you can say, degrading the fecal matter. So there are a lot of microorganisms in your gut that is responsible for your immunity. And during this COVID-19 infection, you have been thrown with medications like a lot of antibiotics, lot of this and that medication that has turned the total, what you can say, system of your intestinal immunity to zero.
Now your good microorganisms that stay in your intestine have been totally lost. Now in the presence of those microorganisms in your body, fungal infection will never be there. Now you have lost all the good microorganisms or the good bacteria that is present in your intestinal system, and you have totally lost it due to overdosing of antibiotics during this period. So you've lost the good bacteria from your intestine, and you've depressed your immunity, and now this is the condition where your fungal infection is very, very favorable to grow. So how and where this fungal spores can go into your body? So previously also you used to take food, so those fungal spores also go into your body, but they never used to create that kind of fungal havoc that we are seeing now. Reason is, previously you used to have these good microorganisms in your body that used to degrade these spores, and they allowed it to expel it out of the body. Now those favorable microorganisms are not there in your body. So whenever you take these fungal spores through food, through water, through air also, because in air also these spores are plentifully available. So these spores go into different parts of your body, and they try to form colonies, and they try to grow very rapidly within our body. And this is the condition. Post-COVID situation is the perfect condition for the growth of these fungal infections. So you should be very, very careful. Never remove your mask, even if you're alone at your home also, because your atmosphere is also containing these fungal spores, and they can enter into your body very rapidly through the air, and you can anytime you can have a fungal infection. If you are having a cut in your skin, particularly soles of your foot, fingers, fingernails, please don't work in soil. Particularly don't come in contact with soil. Soil is a very nice source of this fungal infection, and you can easily contract this fungus through your cuts in your body or skin surface in your body, and you can get or contract this mucormycosis. So what kind of symptoms you will be seeing in case of mucormycosis? So in case of mucormycosis, people will be suffering from one side of the swelling of your face. So not the entire face will get swelling. You will be having only partial swelling of your face, constant headache. You will be having black lesions on the upper side of your mouth. These are due to growth of fungus. You will be developing fever, cough, chest pain, shortness of breath, abdominal pain, nausea and vomiting, and gastrointestinal bleeding. Okay. Now I have specifically mentioned here cavernous sinus and blurring of vision. Now why I have marked it specially in red? Reason is, when you have initial signs and symptoms of this mucormycosis, please visit your doctor and get yourself treated immediately. The more you make a delay, the more symptoms are going to worsen. And what is the worst situation you are going to have? You are going to have blurring of vision. Now, when you are going to have blurring of vision due to mucormycosis, when your fungal infection spreads to this sinus, cavernous sinus, that is the region where your nerve fibers of your eye are going to the brain. So when you have an infection in that region, cavernous sinus region, you will be getting your optical nerves damaged. So when you are getting your optical nerve damaged due to this fungal infection, your blurring of vision will start in front of you. Now, whenever blurring of vision has started, think yourself that you have already had this infection long back, and it is a very dangerous situation where you are now, because blurring of vision is a very, very difficult situation to treat in case of fungal visions. And sometimes, most of the time, people will die once they get this symptom of blurring of vision due to mucormycosis. So what is the treatment option we have? Simple antifungal agents you have to use. And the most common antifungal agent we have in and around us is your amphotericin B. Apart from that, there are other antifungal agents also, like posaconazole, isavuconazole, and these treatments are not 1 day, 2 day treatments. Fungal infection treatment, it is a prolonged treatment. You have to take these medications over a period of time in order to get rid of the fungus. So with this, I end my session now. I hope my session was really fruitful to you, and you could catch up some important points with respect to a lot of options that I showed you, how you're going to manage the conditions with respect to post-COVID situation, how you're going to handle this post-COVID situation. Thank you so much, sir, for this informative session. Yes. We have a few questions.
Sir, you have already highlighted the major complications that are related to post-COVID management and how to deal with it. But you also mentioned few symptoms as termed as the long COVID symptoms, such as that attention disorder related to mental health and sleep disorders. So how should we deal with that, with those complications? Yes. Actually, first I'll like to make the definition very, very clear. Initial 1 month to 3 month post a COVID negative result, that is the region that we call it as long COVID situation. Sometimes this period extends beyond 4 weeks to up to 12 weeks also. And in some people, it has been seen up to 1 year also. So any period beyond this period of acute COVID infection, where you are carrying the symptoms also along with the COVID conditions, that period is called as a long COVID period. Now, during this period, you will be having mostly sleep-related disorders. Now, as I already told you, this the changes in your body is very devastating. This coronavirus has not left any one organ system intact. It has gone into brain, it has gone into kidneys, it has gone into lungs, it has gone into heart, it has gone into your intestine, it has gone into your liver. There is no organ in your body that has left unaffected due to this coronavirus infection. Now, one of the major problems with this coronavirus infection is you'll be losing your melatonin levels in your body. Now, melatonin levels are known to maintain good sleep behavior. Now, when you don't have enough melatonin levels in your body, your sleep behavior is going to change. Now, this sleep behavior, you cannot get it within a period of time. So first you have to get your circadian rhythm intact. That means you should be able to identify whether it is daytime or it is nighttime, because there are some people who stay in their room throughout the day and light, even a stray of light also doesn't enter their room. So they don't know whether it is day or night also. So first you need to perceive what time period is your day. So you have to stay in your room, which is well ventilated. Light is also coming into your room so that you can know that this is day, this is night time. Once you are able to get these kind of small things in your day-to-day activities, you will be always figuring out when to sleep, when not to sleep. Mostly try to avoid sleep during the daytime. Even if you are getting sleepy, try to make yourself busy with some work or other, and please don't sleep during daytime. That is going to affect your nighttime sleep. Whenever you are going to sleep during the night time, have a bit of breathing exercises. So breathing exercises are very, very helpful before going into sleep. So it will increase the oxygen levels in your body and it is going to freshen up your body, and you can easily go into sleep after having your diet. So most people have the habit of going into sleep immediately after taking food, particularly during lunchtime. Had a very nice lunch, go to sleep for 2 to 3 hours, and you feel like you are getting energetic. But at the same time, you are destroying your sleep cycle during the night time. So particularly during night, you have your food, go for a 5-minute walk, have that walk or small amount of breathing exercise at your home, and definitely after that you are going to improve your sleep pattern. I am strongly against use of these medications that induce sleep, but because that is making, these medications are making a fool out of you by just sedating your brain to go into sleep. That is not the real sleep what you want. The sleep should be one where you should go into random eye movement sleep after crossing the non-rapid eye movement sleep. And these phases of rapid eye movement sleep and non-rapid eye movement sleep, there should be at least 4 phases of such rapid eye movement and non-rapid eye movement during your sleep. And whenever you get these 4 phases perfectly, you will be having your perfect sleep. So my suggestion, don't go for medications that induce sleep. I am strongly against such usage of medications that induce sleep. Okay, sir. And sir, another question is that we have heard of many cases in the second wave that people have taken vaccine and still they are infected with COVID positive, and Yes. there are many deaths about it. So what is the relation between, why is that situation arising and how can we deal with that? See, there is one way you can get rid of this infection. Either you take the vaccine or you make others around you take that vaccine. Got my point? So if I am taking a vaccine, I am preventing this infection to come into me, or I am preventing this infection from passing from me to some other person. Otherwise, make all the people around you vaccinated. Even if there is a delay for you for vaccination, no problem, because you are surrounded by people who are already vaccinated. Now, I will come to your second part of your question, where you told some people are vaccinated, but still they are contracting this coronavirus infection. The point is very simple.
coronavirus infection gets into your body and fights against your immunity. Now, it depends on the kind of environment where you're working. If you're working in an environment where the viral load of that virus is very, very high, for example, healthcare workers. Healthcare workers are working in an environment where every day they see hundreds of coronavirus patients. So they're working in an environment where already the viral load is very, very high. So in such cases, even if you have taken the vaccination also, you're bound to get infected by that virus. But in such patients, you won't be getting that aggressive nature of that coronavirus. You'll be getting mild symptoms of that coronavirus, but still the virus will be there in your body, and the virus will go out of your body also. So in such patients, even though you have taken vaccinations, although the viral load in the outside environment where you're working is very, very high, you're bound to get some amount of infection. But the response of your body to that infection will be very mild compared to other people. Okay, sir. That's all from my part. Any other questions to sir? Is there any other question? Yes, sir. So, please notify, or in nutshell, you explain what are the major post-COVID complications to be monitored just after discharge of the discharge from the hospital, or if they get negativity after the positivity of the COVID. So there are various major COVID complications. It has to be monitored seriously. Okay, so I have already highlighted in my presentation, the major complications are with respect to your breathing. Respiratory system is very, very vital, and you know your respiratory system has already seen the worst of attacks it has ever witnessed. So COVID-19 has totally destroyed the lungs environment. So first major complication you are going to get over a period of time post-COVID infection, at least for 1 year, is your breathing. Your breathing is not going to be 100%. So your vital capacity of your lungs is going to fall down. You won't be 100% oxygenated at all times. So breathing habits are a must. And those breathing habits you should be doing on a regular basis for a year or two in order to improve your oxygen profile of your body. The second most important complication you are going to see is with respect to cardiovascular patients, or if you are developing any cardiovascular symptoms. Now, myocarditis is very, very common. Among all the COVID-19 patients, myocarditis is very, very common. Inflammation of the myocardium results in a lot of pain in your muscles in your heart. And the major symptoms that you should be looking for is, if you are at rest, developing chest pain, and you are having shortness of breath during sleep, or particularly during rest, that is a very good indicator that you are going for a myocardial infarction like condition or a cardiac failure like condition. So you should be very, very careful regarding these kind of symptoms. Next other complication you should be looking for, in particular in diabetic patients, is now you are in a lockdown, not exactly lockdown, but you are not frequently moving outside. So your physical activity is very less. So you should have a check on your calories that you are taking every day. It should not be like you are over feeding yourself with calories, and those calories are getting converted into glucose and you are building up glucose levels in your body. So you should also taper your blood glucose levels by reducing your diet. At the same time, visit your doctor, because your physiological state of the body is not in such a condition where all the drugs will be acting at its therapeutic efficiency. Because as I gave you one example of your human serum albumin, your human serum albumin levels are going to fall drastically after this infection. So when you will be having this human serum albumin levels very low, whatever drugs you are taking, the plasma levels will be very high. When plasma levels of the drug will be very high, the pharmacological effects of those drugs will be very, very high in such kind of patients. So even if your doctor has told you take this particular dose of this medication and you will be fine, check it again with your doctor. My health is not properly responding. If I take this drug, I get a lot of arrhythmia, I get a lot of heartbeats, I get a lot of pounding of my chest, I get a lot of sweating. So if you have such kind of symptoms, please share it with your doctor. And the doctor is definitely is going to reduce the drug dosage for such kind of patients. One is with respect to diabetes. The next one is with respect to cholesterol. Since liver function also gets a hit during this COVID-19 time, the cholesterol levels that builds up within your body sometimes get elevated, particularly which type? The LDL type of cholesterols will build up constantly in your body. So always keep a check about these LDL levels, have a cholesterol checkup every 3 months once, and have a monitoring of those cholesterol levels, because once your liver function is going down,
your HDL levels are going to fall down rapidly, whereas your LDL levels are going to rise up rapidly. So these are the few complications you should be frequently monitoring, and particularly with respect to the health, never take out your mask, because after COVID-19 treatment, your immunity level is very, very low. And once you have used these corticosteroids, and because of these corticosteroids also, your response of your immune system also goes low. Moreover, you have been thrown a lot of antibiotics during this COVID-19 period, and because of that, you lost all the good microorganisms in the gastrointestinal tract from mouth to the rectum. And because of this loss of these microorganisms, the friendly microorganisms, fungal infection never used to happen in this scale previously. Now, since you lost all these good microorganisms from your gut, and your immunity comes from your gut only, you lost all the microorganisms. Now, this is a perfect time for growth of fungal infections. So, fungal infections can get into your body through your nasal stream, through your food, through water. So whenever you are taking your food, cook them properly. Never take uncooked food during this time. If you're having any injury in your hands and legs and you're working with soil, be very careful. Wear gloves while working with soil or any kind of activities, because that is going to allow these spores to get into your body very, very fast. So these are some of the things you should be very, very particular after a COVID-19 infection. Thank you, sir. Sir, one last question to answer with. What Yes, should be the role of a student pharmacist in this situation? First of all, since the information available with respect to coronavirus is changing every minute, changing every day, the number of patients are increasing every day, number of patients getting treated every day are coming down. Please update yourself with the recent advances on a daily basis. On a daily basis, a lot of new vaccines are coming into the market. What are those type of vaccines? Whether it is suitable for all type of people, whether you should be avoiding a certain type of vaccines in a certain type of condition. So you should do update yourself. First of all, very updation of your knowledge is very important. You should be having a lot of information with respect to all the complications. Diabetes, hypertension. India is going to be the, I think, hypertension capital of the world and the diabetes capital of the world already. So we are having most of the patients either diabetic, hypertension, thyroid-related disorder problems, anemic-related conditions, whatnot. You are finding all kind of patients in India. So you should be ready to figure out what kind of complication can happen if a diabetic patient is also having hypertension as well as liver disorder. Which type of medications to be given? Whether a particular drug is main route of metabolism is through liver, be sure whether your liver is perfect or not. If your liver is not perfect, avoid such type of drugs. Whether a particular type of drug is particularly eliminated through kidneys, if you know your kidney system is not at its 100% potential, avoid such kind of drugs. So this knowledge about these drugs, which should be taken in which condition of the patient, is very, very critical. And sometimes this is what matters between life and death. Accidentally, you know that I should be taking painkillers when I am having pain. But if you are having kidney disorder and your kidney is really critical, you go for diclofenac kind of non-steroidal anti-inflammatory drugs, you are going to destroy your kidneys. You can go for paracetamol. Paracetamol is safe for kidneys. I am not saying that it is 100% safe, comparatively safe compared to that of diclofenac. So you should be aware about this subtle kind of combination of drugs under certain conditions, where hypertension is there, diabetes is there, thyroid disorders are there, hormonal disorders are also there. So you should be aware about all these small things that can affect the health of the patient. Thank you, sir. Any more questions? I think that's all for the day, sir. Thank you so much for sharing us with such important facts and information about post-COVID complications. And I hope all of us present here must have got an idea of how to deal with these complications and recover quickly. So I would request Mr. Santosh Jha, sir, Vice Principal of Om Sadashiva College of Pharmacy, to conclude this session. Thank you, Snigdha madam. I, Santosh Kumar Jha, Vice Principal and Coordinator of the webinar. So being assigned to conclude the day one of the webinar, the topic was adaptation of life during COVID, precautions and the treatment. So today we were having as speakers of the first session, Sri Girish Tripathi sir, Pro Vice Chancellor, Sri Krishna University, Chhatarpur, Madhya Pradesh, for delivering his session on topic
frequently asked questions on COVID vaccines. That session was very informative and hope all the queries of the participant has been addressed. And the session was very interesting also. We are thankful to sir for sharing his valuable time with us and expecting such more in future also. Thank you, Girish sir. We are thankful to Dr. Sailendra Mahanta sir, Associate Professor, Nirmala College of Pharmacy, to take over second session on management of post-COVID complication. So this topic was very much concerned in today's society, as sir has focused on various points which has to be monitored after COVID, which we call it as a post-COVID. Because we all know that precautions or prevention is better than the cure. So sir has given all the guidelines, or sir has emphasized on all the important points which has to be considered after the post-COVID. Thank you again for great presentation, sir. It was pleasure to have with you us. So with this, I conclude the day one. Thank you all for attending. We hope you have learned and enjoyed the session. Once again, we will meet tomorrow on day 2 program as per the schedule, that is 10 a.m. IST. Thank you very much. Thank you. Thank you so much, sir. With this, we conclude our session today. Thank you all for being a part of today's session. We'll connect back tomorrow with another set of speakers for further discussion on our topic. Expecting you all have been benefited by your session today. Stay safe, stay healthy. Thank you all. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, ma'am. Thank you, Thank you, sir. ma'am. Thank you.